Yes, yes. Palakji, please start the live streaming. It's already, sir. Yes. Still, as our formal ritual to start our meetings with Nokar Mahamantra, shall I request Hirachandji Bapna sir to recite the Nokar Mahamantra? Bapna sir? Yes, sir. आ रही है आवाज सर? हाँ, आ रही है सर. या सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करते हुए नवकार महामंत्र का जाप कर रहे हैं. ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उज्जायाणम, ओम नमो लोए सव्व साहुणम, एसो पंच नमस्कारो सव्व पापपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम. With this, I think Pradeep Bhai has not yet joined. Can I request Vidit Bhai to share some thoughts about the forthcoming program on 27 and some activities of JCF till the time Pradeep sir joins? Jai Jinendra to everyone present here. So JCF is a group of chartered accountants where we have 2,300 life members across India. And we have been conducting regular activities of knowledge sharing, blood donation camps. Then we have Mudra loans. We have tied up with Central Bank for Mudra loans, wherein all chartered accountants, Jain chartered accountants can register themselves as a service provider, and this can help the community at the large. Regarding 27th May, we are celebrating CA Foundation Day, wherein we are expecting more than 1,000 chartered accountants across India. So I humbly request everyone to please register yourselves today. Don't wait for the last moment. This is the program organized by JCAF, and it is open for all Jain chartered accountants across India, whether member or not. So kindly do it and don't miss the opportunity to miss all the chartered accountants across India. Thank you, Bhai. Thank you. Just as Kocha sir has started our meeting just on time, few people are struggling to join on time. That is the problem. What is the issue? Like, I'm getting some messages that we are not able to join. I think Virag Bhai, Palak is that there. registration, can we stop that registration formality again? Palak, can you just see whether, because they're saying that meeting is locked by host? Yeah, I'll just do it. Palak? Let me check. Yeah, I'll do it. Yeah. So okay. Can we have the Zoom ID Vidit Bhai, I have unlocked it. Okay. And even this waiting room is open now. Okay. Yeah. So now the member has joined. No problem. So he was communicating with me. Yeah. Just now wait for 2 minutes. In meantime, let me share some very little knowledge about the topic of money laundering. I think when the business started way back centuries ago, thousands of years back, since then the activity of money laundering has also must have started. The reference of hawala is 8th century back. Hawala is a Arabic word which means transfer of money, and hawala is closely associated with money laundering thing. Even this money laundering term got coined in 1970 with that famous US Watergate scandal, where a huge amount of this political funds were clean, converted from black to white.
I request, please don't unmute yourself. Vidit bhai, can you talk to Pradeep bhai? Yeah, Kanakvir is there. Just one. He is not able to connect. There's a call from Pradeep Bhai's office only. Just hold on. Okay. So let's start with then the session. Dipti ji, you are there? Dipti? Sorry, Marve, क्या बोल रहे हैं? Dipti is there or not in the room? I think there is some connection problem. I think we should start the session now. Like it's already 10 minutes up. So For introduction, like to hear I Rajesh wanted more about him. Dipti to join. Sorry. Dipti for introduction of the speaker. Okay, sorry. I think she must also be facing the same problem of login. Hello. My introduction is there in the group. So you can. Amrit bhai, shall I request you to do the introduction of today's speaker, Sri Rajesh ji Sanghavi? I won't be able to. I'm just driving. So please, it's there in the group. So you can open the resume and just introduce. Yes. Online, you know. इंस्टीट्यूट को नहीं जा रहा अभी एक सेमिनार को मैंने शुरू में Okay. So Rajesh ji Sanghavi is a proprietor of R. Sanghavi and Company Chartered Accountants. He is a practicing chartered accountant for last 34 years, and his office is in Bandra, Mumbai. His areas of practice include income tax, GST, PMLA, Benami laws, POSH, SFIO, FEMA, trust, documentation and drafting, etc. He's dealing with cooperative societies and allied laws, stamp duty, FCRA, RERA, etc. also. After completing the CA, he did his post-qualification management course in Institute of Chartered Accountants of India. He has also done his management course from NMIMS and Willinkar at Mumbai. Risk management and foreign exchange from World Trade Center and finance from Institute of Chartered Accountant, Chartered Financial Analyst of India. He had 35th rank, All India rank in final exam of Chartered Accountancy in 1987. He was second in All India rank in Management Accountancy from ICAI. He is also holding honors in finance course of ICFAI. Honor from he has already been honored with by the World Trade Center course in Forex submitted paper on dollarization, DOLLARISATION, that is converting our currency from rupee to dollarization. This is a new term what I am learning here. He has also given lectures and topics on allied laws, FEMA, day-to-day management, stamp duty, income tax, penalties, PMLA, trust, power of attorneys, POSH, black money, Benami Act, RERA, demonetization, etc. at various forums and seminars. He is a regular lecturer, and he delivers his presentations on various topics, including right to education and RTI also. He regularly contributes in FEMA Risk, Black Money Act, and in ICA manuals. And there is a big list of his achievements and his credentials. Just one thing from reading his biodata, I want to ask one question: why it is called as black money or white money, or why it is called as money laundering also? Isn't it? Isn't this showing a colonial or racist mindset of our lawmakers? That's a good question. Small introduction. I would like to request today's speaker, Sri Rajesh Sanghavi, to please proceed with the topic of the day. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Can I get a PPT sharing? Yes, sir.
करेंगे मैसेज होस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयर. I have Okay. turned on the setting. I hope you are able to share Yeah. now. It's visible, sir. Visible to everybody? Yes, sir. Okay. And आवाज मेरी आ रही है ना? I'm आ रही है, sir. clear? Yes, it's quite clear, sir. जी धन्यवाद. जय जिनेंद्र, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली द एंटायर मैनेजमेंट टीम एट JCAF. मैं शॉर्ट में हमेशा इसे JCAF कहता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आज के इस प्रेजेंटेशन में आई विल कुछ नोटिफिकेशन तो आए हैं जो थोड़ी सी चिंता का विषय हुआ है, बट मैं कुछ मिथ्स को डिस्पेल करना चाहता हूँ. दैट इज इन माय पर्सनल ओपिनियन. और उस नोटिफिकेशंस को समझने के लिए PMLA का छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू होना जरूरी है. इनफैक्ट PMLA और बेनामी, these are two areas जिसमें chartered accountants have been permitted to practice, whether before the ED, whether before the adjudicating authority New Delhi, and also first appeal before the PMLA appellate tribunal, which is at New Delhi. And with all due respect, मैंने देखा है कि I'm not finding a lot of chartered accountants in this field, and I really don't know why, because it is a fantastic field to practice. Nevertheless, let us see कुछ brief overview about PMLA, because ये पूरा detailed session PMLA या PMLA practices या PMLA के critical जो judgments आए हुए हैं उसके बारे में नहीं है, लेकिन Sorry to notification interrupt, sir. Sir, can you please play this PPT so that it's visible to all? Okay, I thought the PPT is It is visible. It is visible. It's visible, but if you just push that button, full screen. Full screen. Yeah. Slideshow mode, slideshow. yeah. So now I put it on that mode itself. I don't know whether it's coming. Can you see the slides now? I put Press it on F5. Press You can F5. press F5. F5. Yeah, that's what I did. That's what I did. I pressed F5. Okay. So near this, minimize this thing below right. Go to your right downstairs. There is a icon. Yeah. Near this, close to it. On the left hand side, yeah. First icon. No. Slideshow. Yeah. The slideshow, correct? Yeah, slideshow. Right. Yeah. That's exactly what I did. And Still not starting? No problem. yeah. That's I will exactly. enjoy this only. Don't worry. No stress. बुक्स मध्ये It's okay. We can proceed. I think it's visible. Quite clear. Okay. तेवढं तर कमी ना, म्हणजे येणार होणारच नाही त्याचं DDS डिडक्शन. ऍक्च्युअली त्याचं कापायचंच नव्हतं, पण आपण कापलाय. Guys, you are kindly unmute yourself, please. Okay. Should I continue? Though I put it on slide on F5, but still I think so. It's not coming in the entire scale. Okay. Should I continue? Yes, sir. Yes. Okay. तो शॉर्ट में ऐसा है कि there was something like FATF G7 countries ने एक थोड़ी सी पार्श्व भूमिका बता रहा हूँ मैं. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज ने 1989 में पेरिस में ये FATF बनाया, और FATF का बेसिक पर्पस यही था कि सारी कंट्रीज इसमें मेंबर्स बन जाएगी, एंड देन दे विल स्पेल आउट सम रिकमेंडेशंस कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोक सकते हैं. बेसिकली उस समय टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए उनके पैसे का जो सूत्र है, जो द फ्लो ऑफ मनी, उसी को आप रोक दीजिए, सो ऑटोमेटिकली टेररिज्म एंड नारकोटिक्स का जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा. उस उद्देश्य से टू कम अप विद recommendations for preventing any laundering of money in different countries. FATF ने 1989 में जो बना था, उन्होंने काफी recommendations दिए थे to all different countries. India became a member from 2010, और ये recommendations इनके अपडेट होते रहते हैं, और लास्ट recommendation अपडेट हुआ है February 2023 में. तो ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं 3rd मई का और 9th मई का, ये नोटिफिकेशन बेसिकली इस रिकमेंडेशन के क्लॉज नंबर 22 और 23 से जन्म लेता है. बट बिफोर वी गो टू दैट, थोड़ा सा देख लेते हैं FATF क्या करती है कि कंट्रीज को ब्लैक, ग्रे या
कोऑपरेटिंग कंट्रीज उस कैटेगरी में डालती है। ब्लैक मतलब वेरी रिस्की जुरिसडिक्शंस like Iran, like Myanmar, like North Korea. They are not cooperating at all in financial transactions and sort of controls. ग्रे लिस्ट में काफी कंट्रीज है जिनको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है बाय IFATF। और ग्रे लिस्ट में फॉर एग्जांपल सूडान है, फिलीपींस है, यूएई भी है फॉर दैट मैटर, यूएई करंटली इन ग्रे लिस्ट। इसीलिए आप में से जो भी यूएई के साथ संबंध रखते हैं या कुछ प्रैक्टिस करते हैं एरियाज ओवर देयर या कंपनी फॉर्मेशंस या ऑफशोर direct investments, etc., you will find that currently opening bank accounts in UAE, fund transfers in UAE is not that easy. A lot of questions are being asked in UAE. तो लोगों के जो धारणाएं हैं कि UAE में बहुत इजी है, दुबई में बहुत इजी, भाई ऐसा भी इतना नहीं रहा है, because UAE is on the grey list. India is not on the black, not on the grey list. We are supposed to be, we have a good recommendation and we are completely a cooperating jurisdiction. और हमारी कंट्री का नवंबर 23 में म्यूचुअल इवैल्यूएशन होने वाला है बाय FATF, और उस इवैल्यूएशन में इंडिया गेट्स, इफ आई कैन यूज द वर्ड, अ गुड क्रेडिट रेटिंग। इसीलिए काफी रिकमेंडेशंस FATF के आते हैं और उन रिकमेंडेशंस को इंडिया में द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई देम अकॉर्डिंगली। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग और ये चीजें आ कहां से रही है। FATF अब PMLA, so it is basically an act, ये तो preamble है, to prevent money laundering, ML यानी कि money laundering, and to provide confiscation, etc., etc. ठीक है। Now PMLA, the first impression जो हमारे माइंड में आता है, अरे ED की रेट बढ़ गई, अरे वो कुछ तो भी ब्लैक का व्हाइट किया, something like that, जैसे भाई साहब ने भी बताया ना, these kind of words, ब्लैक का व्हाइट लिया, हवाला हो गया, पैसे फॉरेन कंट्रीज में भेजे, केमन आइलैंड में पैसे भेजे, ये किया, वो किया, and that's why ED is checking into all these transactions, etc., etc. Yes, to a large extent that is right. PMLA के basically दो भाग हैं। First part is the money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, उसमें कार्रवाई क्या होती है, ये शब्द शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, POC यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो क्या होता है, ECIR यानी कि जैसे पुलिस स्टेशन में FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऐसे ED भी अपना एक प्रकार का FIR बनाती है, उसे FIR नहीं कहते हैं, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR कहते हैं। ED प्रॉपर्टी को अटैच कैसे करती है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, अरेस्ट होता है, बेल होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर PAO क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, उनके ऑर्डर्स के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में कैसे जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया is the money laundering part वाली प्रक्रिया, this entire subject in the PMLA Act. But this is one thing, this is just one thing. PMLA में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा there is one more part, और वो है रिपोर्टिंग एंटिटीज, और यहीं से हमारा संबंध जुड़ रहा है अभी इस नोटिफिकेशन के साथ। अब ये रिपोर्टिंग एंटिटी नाम की चीज क्या होती है भाई PMLA में? सो रिपोर्टिंग एंटिटी बेसिकली मींस कि ED through one of their departments, let's call it FIU, it comes under Department of Revenue, Ministry of Finance, एक विभाग, एक वर्टिकल है, Financial Intelligence Unit, and these kind of FIUs are in many countries all over the world, और ये FIUs अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, and that is why in a lot of countries फिर उसके एक्सचेंज के बेसिस पे कार्रवाइयां इनिशिएट होती है। जैसे कि a lot of you all must have recently seen a lot of notices from the DDIT office, FAIU office, कि भाई आपका फॉरेन में बैंक अकाउंट है, आपके फॉरेन में एसेट्स है, आप आपकी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, and the DDI has sent you notices and they are send you summons, and you are going and responding them at wherever, Air India building or wherever in Mumbai you are responding. तो there is a concept of reporting entities, यानी कि PMLA Act में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर ब्रोकर्स, ऐसे कई लोगों को रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में डाला गया है, और इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, इनके ऊपर एक जवाबदारी डाली गई है कि अगर आपको कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है, अब सस्पिशियस की क्या व्याख्या है, वील सी लेटर ऑन, आपको कोई टिपिकल कैश ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है, आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अबाउट सर्टेन अमाउंट्स हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कुछ transactions हैं, if you are finding something
if I can use the word right now, slightly suspicious, तो आप उसे फ्लैग कर दीजिए और FIU को रिपोर्ट कीजिए, so that FIU तुरंत उसके ऊपर स्टडी करेगी, एनालाइज करेगी, दे विल वर्क अपॉन इट, और वो समय होते ही कुछ ना कुछ एक्शन अगर जरूरत पड़ा तो कर सकते हैं. So don't wait for an offense to happen and then take action. No, reporting entities के जरिए उन्हें continuous information आती जाए, उसे वो फिल्टर करेंगे and then they will take action. तो reporting entity का काम क्या है? Basically कुछ suspicious transactions वगैरह वगैरह समय होते हुए FIU को रिपोर्ट कर देना. This is the job. So एक प्रकार का preventive कार्रवाई भी चलती है FIU में. So PMLA is two parts, the money laundering part and the reporting entities का part. अब मनी लॉन्ड्रिंग पार्ट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, बिकॉज यू नो सम रॉन्ग नोशंस आर देयर अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग. अभी से मनी लॉन्ड्रिंग अप्लाई हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ गए. नो 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 नो, दैट्स नॉट सो. आई मीन लेट्स सी व्हाट इज द लॉ. तो मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग और PMLA, अगर इफ यू वांट टू हैव अ ग्रास्प ओवर दिस, just read section 3. That's all, friends. I am only requesting you all, केवल section 3 पढ़ लो. section 3 और थोड़े बहुत definitions है. Proceeds of crime क्या होता है, 2-3 definitions है. I am not telling you to go through the entire act. No. केवल section 3 मैं 2-3 बार लूंगा. section 3 आप उसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे and believe me, आपका मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ आ जाएगी, अच्छी पकड़ आ जाएगी. So let us see what is section 3. ये scheduled offense, या हम scheduled offense को कई बार predicate offense शब्द भी वापरते हैं. ये क्या चीज होती है, proceeds of crime क्या होता है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में let us see so that we can understand कि money laundering होता क्या है और ED इस पे एक्शन कैसे करती है. By the way, ED let's say 1950 में ये बना था फेरा हैंडल करने के लिए, फिर उसके बाद फेमा हैंडल करने के लिए, certain parts of NTDS, और फिर एक PMLA का भी इनको एडिशनल काम दिया गया. लेकिन आज की तारीख में ED is basically handling PMLA, FEMA और FERA के तो चीजें you know they have become secondary. Okay. PMLA अगर थोड़ा डेप्थ में भी आपको पढ़ना हो तो ये विजय चौधरी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 27 जुलाई 2022 का इज वेरी क्रिटिकल. थोड़ा लंबा जजमेंट है लेकिन पैरा 187 में कंक्लूजन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर एनीबडी हु प्रैक्टिसेस इन PMLA. वी वोंट गो इनटू दिस जजमेंट. अब ये जो कुछ लाइनें मैंने स्क्रीन पे बताई है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल दिस. लेट अस जस्ट गो थ्रू इट स्लोली. वी शुड आल्सो नो व्हाट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. तो अगर आपको सेक्शन 3 अच्छी तरह से थोड़ा सा आ गया, अगर आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में बात समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, बिलीव मी यू हैव रीजनेबली गुड नॉलेज ऑफ PMLA. वर्किंग नॉलेज तो आपका अच्छा हो जाएगा. अब देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है. Whoever directly or indirectly attempts to indulge, तो शब्द बड़ा जनरल हो गया है. Whoever, whosoever में सब आ जाते हैं. अब सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाएंगे, बैंकर्स आ जाएंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे, आर्किटेक्ट्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे. कॉमन मैन आ जाएगा, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, जुडिशरी आ जाएगा, सब आ जाएंगे. Everybody. The PMLA Act 2002 has come into force in this country on 1st July 2005. तब से any and everybody is coming within the network of PMLA. यानी कि जो भी व्यक्ति directly या indirectly he attempts to indulge और knowingly assists, मदद करता है, और knowingly is a party, वो एक पार्टी है, और is actually involved in any process or activity connected with what? Proceeds of crime. मैं बताऊंगा आपको proceeds of crime क्या होता है और क्या क्या. भाई वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पोजेशन है उस व्यक्ति के पास, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कंसीलमेंट में उसने मदद की है, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के एक्विजिशन में मदद की है उसने, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के उपयोग में मदद की है, और उसने शायद मदद की है इन प्रोजेक्टिंग दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी. जो भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इंडल्जिंग किया, असिस्टिंग किया, पार्टी है, involved in any process or any activity connected with POC, मैं proceeds of crime को short form में POC कहूंगा,
पोजेशन, कंसीलमेंट, देखिए काफी बड़ा डेफिनेशन है, दायरा इन्होंने बहुत बड़ा रखा है, इसलिए इस प्रकार के बड़े दायरे की वजह से लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग इशू. So anybody involved into all of this or any one part of this, किसी ने असिस्टिंग नहीं किया, केवल उसने पोजेशन किया था अपने पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कुछ दिनों के लिए, किसी ने उसे कंसीलमेंट यानी छुपाने के में मदद की, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी लोग गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं. एंड आई एम रिपीटिंग, इसमें सब आ गए, एवरीबॉडी. तो ये कहना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी 3rd में 2023 से मनी लेंडिंग के दायरे में आ गए इज रॉन्ग. चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ो, एवरीबॉडी हैज बीन इन्वॉल्वड, हूसोएवर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, ये मेन सेक्शन 3 है और इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है. ये एक्सप्लेनेशन 1 है और इसका अगला वाला एक्सप्लेनेशन 2 है. मैं आपको एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में आई वुड टेक यू इन डेप्थ इनटू इट. बस आप एक मोटा मोटा हिसाब पकड़ के चलना कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देखिए वही शब्द इधर भी वापरे गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अटेम्प्टिंग, इंडल्जिंग, असिस्टिंग पार्टी, इन्वॉल्वड इन प्रोसीजर ऑफ Rajesh bhai, जी. sorry to interrupt you again. Can you just stop the sharing and again restart, because I think we are at 3rd slide only. Okay. I request you to please stop the sharing and again start it. Yeah, sure. I think Rajesh ji has lost its connect. Vidit bhai, can you please call Rajesh bhai? Rajesh sir is there in the meeting only. I don't think so. Rajesh sir, please switch on your camera. He is there online. राजेश जी है ऑनलाइन, म्यूट पे चले गए शायद, म्यूट और उनका विंडो बंद हो गया. Meanwhile, I would like to request Palak or Vijay, if anybody is handy, our 27 May that registration link can post in the chat box if it is possible, so that all 58 members can register right now. Meanwhile, we can get back to Rajesh sir. Palak, if you have, you can post, or Vijay, if you have, you can post 27 May link in the chat box. Yeah, I'll do it. I'll do it. So friends, meanwhile, we are Rajesh sir is back. Meanwhile, would like to request everyone to register for 27 May Foundation Day. It's also for family members. So register with your family members. You have to just add your number of family members there. Only one registration link with the member and the family members. So all together you can do that as well in a one registration. So we have 61 members here. So I think Palak can immediately identify also how many are registering right away.
So friends, meanwhile, would like to tell that 2 to 6, we have a session for chartered accountants as an panel discussion and basically for members. And after that, we have a chovyar for all the members and the family members. And then we have a award night and cultural evening and musical night by renowned singer as well. And now Rajesh sir is back, so would like to request Rajesh sir to take the proceeding ahead for our today's session. Okay. Okay, so is the screen visible? Or... Yes, sir. Yes, sir. And Vanna madam has already posted the link in the group. So please request all the members to register as well. Sir, screen is visible and your camera is also visible, sir. Video is also there. Okay. Just Rajesh, can you just again try to play the slides? I'll try that. Okay. Now, can you see Supreme Court judgment Vijay Chaudhary case? Yes, sir. Yes, sir. PMLA Money laundering. Yes. We are on slide number 8. Yeah. Explanation 1 is there right now on the screen. PMLA section 3 money laundering. Okay. So I think so. Slide 8. તમે ખાલી સ્લાઇડ શો પર ક્લિક કરો ને રન સ્લાઇડ શો એટલે આપકો ફૂલ સ્ક્રીન માં દેખાય. So that's what I did, run slideshow. મારા અહીંયા it's coming on full screen, but I think so it's not coming. નહીં તમારું તમને આખું સાઈડ પણ દેખાય છે ઓલું પણ તમે છે ને સૌથી નીચે. Yes, that's what I did. That's exactly what I did. Slideshow મેં કર્યું. નહીં અત્યારે સ્લાઇડ શો નથી. Okay. Move the slide also, sir. 8 to 9 or 10. Let me just see. Now is it visible? Explanation 1, Yes, explanation now 2. it is 10. સાંભળો You can cut it. એક જ સેકન્ડ ખાલી તમે છે ને સૌથી ઉપર એનિમેશન ની બાજુમાં સ્લાઇડ શો લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરો ને. હા એના પર ક્લિક કરો અને શું લખ્યું છે ફ્રોમ કરન્ટ સ્લાઇડ પર ક્લિક કરો. ફ્રોમ કરન્ટ સ્લાઇડ બસ. તો એ ફૂલ સ્ક્રીન કેમ નથી આવતી તમારી? હા એટલા માટે that's what I'm saying. એટલે થોડું છે some issue. ચલો કઈ Anyway, we'll continue with this. Explanation 2 આવી ગયું, correct? આજે અહીંયા પ્રેઝન્ટ ઓનલાઈન પણ લખેલું છે. ચલો ઠીક છે. Anyways, we are with you. Over to you. Okay. So everybody can see explanation 1 right now? Yes, sir. So I've just gone back up money lending. This is the main, definition for money laundering as we discussed. This is explanation 1. So anybody being connected with anything concerning the proceeds of crime, explanation 2 is a continuing activity. That's it. Now comes the most important part. We need to understand what is POC. That is the most critical thing. PMLA does not mean किसी ने टैक्स की चोरी की तो ED आ जाएंगे, भाई किसी ने ये किया तो ED PMLA कर देगा. नहीं, it's not like that. Let's understand it very, very carefully, and this will clear a lot of myths about PMLA कहाँ पे apply होता है और कहाँ पे apply नहीं होता है. That's important. So what is proceeds of crime? Proceeds of crime means any property derived directly, indirectly as a result of criminal activity concerning scheduled offense. Scheduled offense. Excellent. Now I'm just jumping over, friends. Now listen to the next statement I'm making. Now I'm going to cover scheduled offense, proceeds of crime, and again back to the definition, section 3. And this will make it, I suppose so, very, very simple. Any property means movable, immobile, it means money or non-money or whatever. Mobile, immobile, tangible, intangible, corporeal, incorporeal. Any property generated from violation of certain sections, not all, violation of certain sections of about 30 different laws. I'm repeating. Any property generated from the violation of certain sections of 30 different laws will be proceeds of crime, and those violations of certain sections of those 30 different laws is a scheduled offense. Let's take an example. 30 laws में से एक लॉ है इंडियन पीनल कोड, एक लॉ है सेबी, एक लॉ है ट्रेडमार्क एक्ट, एक लॉ है पोल्यूशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक लॉ है इमिग्रेशन एक्ट, एक लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऐसे 30 डिफरेंट लॉज हैं. एक कंपनीज एक्ट है सेक्शन 447, एक ब्लैक मनी एक्ट है सेक्शन 51. तो ये 30 डिफरेंट लॉज के
कुछ सेक्शंस के वायलेशंस किया तो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गया। जब तक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं होता है पीएमएलए जन्म नहीं लेता है। सिंपल। जब तक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं होता है पीएमएलए जन्म नहीं लेता है। Now let's to explain this, let me take a live example. वो 30 लॉज में से एक लॉ है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन लगभग 58 या 60 सेक्शन ही पीएमएलए के दायरे में आते हैं एज शेड्यूल्ड ऑफेंस। लेट्स टेक वन ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, द मोस्ट इजीएस्ट वन फॉर मी टू एक्सप्लेन, सेक्शन 302 व्हिच इज अ मर्डर। तो पीएमएलए में एक सेक्शन है आईपीसी में एक सेक्शन है 302। 302 का अगर किसी ने गुनाह किया, मर्डर किया, और सपोजिंग मर्डर करने के लिए द पर्सन टुक अ सुपारी ऑफ 1 करोड़ रुपीस, सो दैट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। और वो 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को जो मिला जिसने मर्डर किया, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को जो 1 करोड़ रुपया मिला फॉर डूइंग द मर्डर, शेड्यूल्ड ऑफेंस, दैट 1 करोड़ इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ओके, सो आई एम रिपीटिंग, 30 डिफरेंट लॉज के कुछ सेक्शंस के वायोलेशन से जो संपत्ति जनरेट होती है उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, उन वायलेशंस को शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है बाय कमिटिंग दोज वायलेशंस, दिस प्रॉपर्टी इज टेंटेड प्रॉपर्टी। ऑफेंस, यस इट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। वो 1 करोड़ क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज बेसिकली टेंटेड मनी, दाग लगा हुआ पैसा है। नो, मर्डर किया, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस पकड़ेगी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशंस कोर्ट में मैटर जाएगा, उसको सजा मिलेगी, ऑल दैट इज आईपीसी एंड सीआरपीसी। वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, दैट इज नॉट पीएमएलए। लेकिन वो 1 करोड़ रुपीस जो टेंटेड पैसा है, उस टेंटेड पैसे को एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, बहुत शातिर लोग अपना दिमाग लगाते हैं, उस टेंटेड पैसे को अनटेंटेड करने की प्रक्रिया, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग तभी जन्म लेगा जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है। शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग हो नहीं सकता है। दे बोथ आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सो कमिंग बैक इन द सिचुएशन, वो जो मर्डर हुआ वो तो पुलिस की कार्रवाई आईपीसी होती रहेगी, लेकिन वो 1 करोड़ को टेंटेड से अनटेंटेड करने की प्रक्रिया में anybody is directly or indirectly indulging, anybody is assisting that proceeds of crime, 1 crore, anybody is helping to convert that from tainted to untainted, anybody who's in possession of that proceeds of crime, anybody who's in the acquisition of that, in the use of that, etc, etc, that long definition of section 3, जो भी उसमें इन्वॉल्व है वो सब पीएमएलए के दायरे में आ गए। मेन ऑफेंस इज समथिंग एल्स, शेड्यूल्ड ऑफेंस जो होना है उस मर्डरर का जो होएगा वो होएगा, लेकिन ये कन्वर्जन की प्रक्रिया फ्रॉम टेंटेड टू अनटेंटेड, इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई होती है अंडर सेक्शन 3, एंड दिस इज डन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर। So I hope now the story is slightly clear. I'm going back on the slides, friends. What is proceeds of crime? Most important part. POC नहीं है, scheduled offense नहीं है, तो PMLA जन्म नहीं ले सकता है। Any property POC derived directly, indirectly as a result of criminal activity relating to scheduled offense. अब इंडियन पीनल कोड में बहुत सारी दूसरी भी धाराएं हैं। लेट्स से देयर इज सम सिंपल धारा जिसमें किसी ने एक दूसरे को धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज कर दिया, रास्ते पे चलते कुछ हो गया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, समथिंग लाइक दैट। या लेट मी टेक द मोस्ट स्टूपिड थिंग, पॉकेट काट लेना, यू नो, पिक पॉकेटियर्स, वो भी आईपीसी की धारा में लेट्स से इट्स एन ऑफेंस। I'm not going deep into IPC. I just want to take a simple example. Supposing that offense is not covered under scheduled offense, तो उसकी वजह से पीएमएलए जन्म लेगा नहीं। दो जनों के बीच में कुछ गुस्सा हो गया, समथिंग एंड सम माइनर ऑफेंस हैज टेकन प्लेस, तो उसकी वजह से पीएमएलए जन्म लेगा नहीं। PMLA is only originating from certain scheduled offenses. This is the $1 million point. This has to be understood carefully. Any and everything doesn't come under.
एंड फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स वो 30 लॉज में इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। तो इनकम टैक्स में अगर किसी पे कार्रवाई हो रही है, so under the income tax act, if there is some action against a person because you know tax की चोरी की या some penalty and whatever is going on, that is not coming under the definition of scheduled offense, and that is why that is not leading to PMLA. The scheduled offenses are the most important ones. So now let us understand what are some of the scheduled offenses. I can't take you through all the 30 different laws and all the sections of which are under scheduled offense. We'll just see a few. For example, ये देख लीजिए. This is the Indian Penal Code. इसके sections देख लीजिए. Only these sections are being covered under PMLA. Not all. And some sections are very critical जो मैंने यहाँ पे लिखा है, but many of you all may not be knowing these sections. 413, 414, 412, you know, चोरी का माल खरीदना. Sometimes some jewelers के ऊपर accusations होते हैं कि इन्होंने चोर से चोरी का माल खरीदा. 420 is cheating. 423 is fraudulent execution of a deed of transfer. वो deed of transfer जिसमें fraud हुआ है वो बनाया किसने, किसके ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट बना है, anybody involved indulging in knowingly assisting. So these are scheduled offenses. 423 section देखिए. And friends, I suppose you all would be knowing the difference between cognizable offense and non-cognizable offense. Non-cognizable मतलब पुलिस स्टेशन में जाके केवल एक NC बनाया जाता है, उसमें नॉर्मली अरेस्ट प्रोविजंस नहीं होते. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट हो सकता है, एंड दे मे बी बेलेबल, दे मे बी नॉन बेलेबल. So these are scheduled offenses under the Indian Penal Code. मैंने थोड़ी सी छोटी सी लिस्ट दी है, and some of the lists are slightly critical because a lot of chartered accountants are doing document preparations also in their office. So they have to be careful that these documents don't contain any fraudulent things. Otherwise, ये ईमेल पे किसी ने एक्स ने वाई को ईमेल पे भेजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ईमेल पे डॉक्यूमेंट भेज दिया अपने क्लाइंट को, पता चला उसमें कोई फ्रॉडुलेंट टर्म्स कंडीशंस, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे हैं. No, that can be risky for all those people involved in this because this is a scheduled offense. और देखिए 467 forgery, etc. etc. I don't want to take you through IPC. तो ये सब scheduled offense में आ रहा है. IPC is one of the law out of the 30 laws. दूसरा लॉ देखते हैं, कस्टम्स एक्ट. भाई किसी ने कस्टम्स की इवेजन की चोरी की, सेक्शन 135, और नीचे देखिए 132 false declaration. A lot of professions are giving declaration regarding customs, regarding imports, etc., regarding exports, कितना remittances आ गया, etc. etc. अब क्लाइंट ने अगर कोई भयंकर इवेजन हुआ है ड्यूटी वगैरह का, एनीथिंग, या पता चला कि वो जो सर्टिफिकेट्स जा रहे हैं वो फॉल्स जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शेड्यूल्ड ऑफेंस. उसमें क्लाइंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है, अनफॉर्चुनेटली उस प्रोफेशन पे भी आ सकता है. बिकॉज गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 3. सेक्शन 3 क्या कह रहे हैं? एनीबॉडी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, इंडल्जिंग, असिस्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई नो यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड फ्रेंड्स, शायद आप ये पूछना चाहोगे कि मैंने तो ऑनेस्टली जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसके बेसिस पे मैंने बनाया ये सर्टिफिकेट, मुझे क्या मालूम कि वो क्या हेरा फेरी कर रहा है कस्टम्स में, उसने डायमंड इंपोर्ट किया और डायमंड इंपोर्ट नहीं किए, केवल कांच के टुकड़े इंपोर्ट किए, या व्हाटएवर यू मस्ट हैव डन, या एक्सपोर्ट दिखाया. आई डोंट नो दैट. मैंने तो केवल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सर्टिफिकेट किया, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम द इंपैक्ट कम्स ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर यही इंक्वायरी तो ईडी करेगी. सो कस्टम्स is also coming under the schedule offense, but not all the sections of customs. केवल 135 और 132, only these two sections. और देखिए सेबी एक्ट सेक्शन 12A, insider trading, you know, buying and selling of shares, manipulative और deceptive तरीके से shares बेचना. Now, if you read that line, मैं अभी एक statement pass करूंगा and then see how it is getting connected. Friends, penny stock. There have been a lot of SEBI orders जिसमें penny stock को manipulative या deceptive device माना गया है. That means section 12A के orders pass हुए हैं SEBI के, and 12A of SEBI is a scheduled offense. इसका मतलब penny stock जिन्होंने किया है, जिन्होंने artificial inflation किया है या circular trading करके inflate किया है and some bungling किया है into that, it is becoming an offense under 12A, and 12A is a schedule offense. और उसमें जो जनरेट हुआ है पैसा, that is proceeds of crime, और फिर उस टेंटेड को अनटेंटेड करने की प्रक्रिया is money laundering. Now I'm quite sure all of you will get a shock of this कि oh my god, ये तो काफी बड़े स्केल पे हुआ है,
हो रहा था एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. फ्रेंड्स, सेक्शन 12A इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और 12A हुआ और उसमें से जो पैसा जनरेट हुआ दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यदि शेड्यूल्ड ऑफेंस है और यदि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो पीएमएलए के दायरे में आएगा. ठीक है, सेबी को जो करना है वो सेबी करते रहेंगे कार्रवाई, लेकिन जो मनी पार्ट है ऑफ टेंटेड टू अनटेंटेड दैट इज कमिंग अंडर पीएमएलए. लेट्स सी समथिंग एल्स. ये 24 भी सेबी का है. ट्रेडमार्क एक्ट, नो फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क इज अ वेरी माइल्ड एक्ट. पर अगर applying for a false trademark and all these kind of provisions which are written on the screen, this is also a scheduled offense. So don't think PMLA is don't think that scheduled offenses are some very serious offenses. जैसे murder मैंने example लिया, yes that is serious. Extortion, yes that is serious. Cheating, yes that is serious. लेकिन ट्रेडमार्क, अब ये तो शायद आप सोचोगे ट्रेडमार्क में क्या उसका अगर वायलेशन हो गया तो ठीक है, ट्रेडमार्क वाले देखेंगे, बट इट कम्स अंडर पीएमएलए. फ्रेंड्स, लुक एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. ईमेल हैकिंग किया, पासवर्ड्स हैकिंग किया, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इंटरसेप्ट करके कुछ गड़बड़ियां की. और छोड़ दो, मैं तो बैंकिंग हैकिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, बैंकिंग हैकिंग को छोड़ दीजिए. बट जनरली अगर किसी की ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी हुई है तो वो आईटी एक्ट के धारा 72 75 में दैट इज आल्सो शेड्यूल्ड ऑफेंस. अब उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बातें अलग है, बट इट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. और जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गया वह पीओसी और वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग आ सकता है, एंड दैट इज व्हाट द ईडी विल चेक. लेट्स सी सम मोर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जरा देखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स इन व्हाटएवर, नदी या इधर जो डिस्चार्ज करते हैं पोल्यूटेंट, ये भी शेड्यूल्ड ऑफेंस है. लेट्स सी सम मोर. ब्लैक मनी एक्ट, इसका सेक्शन 51, केवल सेक्शन 51, that is a scheduled offense, not the other ones. So recently a lot of notices have been issued under the BMA, Black Money Act, कि भाई आपने आपके रिटर्न के फॉरेन एसेट मॉड्यूल में बैंक अकाउंट नहीं दिखाया, शेयर्स नहीं दिखाया, तो हम आपके ऊपर 10 लाख का पेनल्टी लगाएंगे. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मे बी 43 or 46 ऑफ द बीएमए एक्ट, वो अलग है. दैट इज नॉट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. व्हाट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर द बीएमए? ओनली सेक्शन 51. कंपनीज एक्ट में केवल सेक्शन 447 आ रहा है शेड्यूल्ड ऑफेंस. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 30 डिफरेंट लॉज के कुछ सेक्शंस के वायलेशंस शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं. उस शेड्यूल्ड ऑफेंस से जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसे पीओसी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं. ये पीओसी टेंटेड प्रॉपर्टी होती है. इस टेंटेड प्रॉपर्टी को अनटेंटेड करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, इज मनी लॉन्ड्रिंग. So now we're getting a proper idea of this. Prevention of Corruption Act, only section 7, 8, 9, 10, they are coming under PMLA Act. Now friends, section 8, section 9 में रिश्वत लेना is a crime. I totally agree. और money laundering is a scheduled offense. जो अमाउंट इन्वॉल्व है दैट इज पीओसी और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग अप्लाई होता है, वो भी बात सही है. लेकिन द सैड पार्ट इज सेक्शन 8 का डेफिनेशन देखिए अमेंड हो गया. जिसने रिश्वत दिया है वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी माना जाता है, अनलेस रिश्वत देने वाला व्यक्ति हैड टू पे द रिश्वत आउट ऑफ सम मजबूरी, एंड विद इन 7 days ऑफ गिविंग द रिश्वत और द ब्राइब ही टेल्स द कंसर्न डिपार्टमेंट्स कि मुझे मजबूरी में रिश्वत देना पड़ा, तो फिर देन ही इज नॉट अ दोषी व्यक्ति. अदरवाइज लेने वाला रिश्वत भी गलत है और देने वाला भी गलत है. दीज आर द अमेंडेड प्रोविजंस. वेरी ऑफन वी डोंट नो व्हाट आर द अमेंडेड प्रोविजंस. और एक और बात है, सेक्शन 8 ऑफ द पीसीए एक्ट, पीसीए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अनड्यू एडवांटेज बोला गया. और अनड्यू एडवांटेज की व्याख्या क्या है? जस्ट सी दैट फ्रेंड्स. अनड्यू एडवांटेज मींस ग्रेटिफिकेशन, एनी ग्रेटिफिकेशन, नॉट लिमिटेड टू money, or gratification estimable in money. No. Now there is a lot of debate on this point. I don't want to enter into the debate, but I want to give you a shocking concept. किसी ऑफिसर को दिवाली के दिन चांदी का छोटा सा एक कॉइन गिफ्ट दिया. Is that an undue advantage? Not in money, but it is in money's worth. It is a gratification. No, yes, the answer is वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उन्हें दिवाली के अवसर पे, हमारी एक प्रथा है, हम देते हैं, एक दोस्ती है, something like that. Friends, things have to be understood in the proper context. As I said, I'm not entering into this debate, but in acts में शब्दों के definition and अर्थ are very, very critical, and they can have different type of ramifications. That is when a lot of government offices at the occasion of Diwali and all that, they don't permit gifts inside. Anyway,
Certain sections of Prevention of Corruption Act, that is a scheduled offense. अब ये सारे laws देख लीजिए, I'm not getting into them. इन सारे laws के कुछ sections के violations are coming under scheduled offense. ये laws देख लीजिए. All these laws, certain sections coming under scheduled offense. So now you have understood what is scheduled offense. 30 different laws, some section violations, scheduled offense. उसमें से property generate होना POC है. उस POC which is tainted, उसको untainted करना, that is money laundering. इस process में जो भी involved है, directly, indirectly, knowingly, assisting, concealment, possession वगैरह वगैरह. जैसे in my example, किसी ने murder किया, 1 करोड़ रुपए लिया, वो 1 करोड़ 4 दिन के लिए अपने दोस्त के घर में रखा. उसके पास पोजीशन है उस टेंटेड मनी का, so he is also involved in the process. उसमें से कुछ पैसे उसने अलग-अलग लोगों को 25-25 लाख 4 लोगों को दे दिया और उनको कहा तुम्हारे बैंक में जमा कर दो और बाद में मुझे दे देना, etc. etc. I'm just taking a stupid example. Please forgive me for that. All those involved in the possession, acquisition, concealment, use, knowingly, unknowingly, aiding, assisting, etc. are involved in the process of money laundering. This is where everybody comes in the net. Money laundering में होता क्या है? Placement, layering, integration. Now, money laundering, the example I give you was a very basic example. It's a very stupid example, if I can say. But in real life, things don't work that simply. जैसे किसी ने बैंक के साथ cheating किया, बैंक से टर्म लोन ले लिया और कहा कि टर्म लोन मुझे बिजनेस के लिए चाहिए, और वो टर्म लोन का गलत यूज करके अब्रॉड भेज दिया, अपने कुछ कंपनीज में दिखा दिया इन्वेस्टमेंट्स, और फिर बाद में बैंक को बोल दिया सॉरी आई कांट पे योर मनी, और बैंक ने एंड यूज सर्टिफिकेट मांगा तो किसी प्रोफेशनल का एंड यूज सर्टिफिकेट भी बता दिया. 2-3 साल बाद बैंक को पता चलता है कि अरे ये तो ना हमारे साथ चीटिंग की, हमसे 100-200 करोड़ का लोन लिया, वो लोन से कोई मशीनरी कुछ खरीदी नहीं, बिजनेस में यूज नहीं किया, ये पैसा तो इधर उधर करके वाया डिफरेंट कंपनीज करके ये तो पैसा कहीं तो भी केमन आइलैंड्स या मॉरिशस या कहीं तो भी भेज दिया भाई साहब ने. हो सकता है पैसा घूम के वापस इंडिया भी आया, हो सकता है, wouldn't know friends. Now this is where what comes up is the concept of placement, layering, integration. The money is taken into the system, circulated amongst different companies, कुछ लेयरिंग होता है और वो टेंटेड पैसा वापस घुमा फिरा के अनटेंटेड करके शायद इंडिया वापस ले आए. So these are complex things. These are complex things which are done in money laundering. Placement होता है, layering होता है, integration होता है, and then people do the entire process of money laundering. And again, as I said, anybody involved in this. तो ये एक सिंगल फ्लो चार्ट जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस बता देगा. शेड्यूल्ड ऑफेंस, मर्डर ले लो, एफआईआर पुलिस ने किया, चार्जशीट वगैरह होगी, कोर्ट में जाएगा. उसके बाद अगर उसमें कुछ पीओसी है और उसका टेंटेड से अनटेंटेड का प्रोसेस है तो ईडी एक्शन में आ जाएगा. ईडी अपना एक इंफॉर्मेशन केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएगा, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ईसीआईआर बनाएगा, और ईडी तुरंत जो भी उनको दिख रहा है कि इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं और उनके पास उस 1 करोड़ तक की जो भी वैल्यू को प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है या कुछ भी है, उसे अटैच कर लेगी. एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, पीएओ, ईडी वो करेगी, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर. और फिर ईडी वो पूरी अपनी फाइल तैयार करके प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, और उन्होंने जिनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, समन देते लोगों को, कई बार अरेस्ट भी करते हैं, वो स्टेटमेंट्स वगैरह बना के ईडी वो पूरी फाइल दिल्ली भेज देती है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन दिल्ली ऑन पार्लियामेंट स्ट्रीट is a superior body to the ED. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में नॉर्मली 2 मेंबर होते हैं और वो ईडी की कार्रवाई को फिर से स्टडी करते हैं, और ईडी ने जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर बनाया है उसे कंफर्म करते हैं या रिलैक्स भी कर सकते हैं कि नहीं ये अटैचमेंट सही नहीं है, ये व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है या मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ फर्स्ट अपील इज बिफोर द पीएमएलए ट्राइब्यूनल एट न्यू दिल्ली. इन द मीन टाइम अगर ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में उसके ऊपर फिर से सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होती है एंड द पर्सन में बी सेंट टू जेल. तो शेड्यूल्ड ऑफेंस की भी कार्रवाई चलेगी और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसिक्यूशन की भी कार्रवाई चलेगी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद सिविल कार्रवाई चलती रहेगी. ऑल दिस हैपेंस, दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ इवेंट्स. सो सम एंड सब्सटेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस, एफआईआर, ईडी थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, ईसीआर बनाती है, कई बार उसको समन भेजती है सेक्शन 50 में कि हमको आके मिलो, हमको आपसे पूछताछ करनी है, अरेस्ट भी कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा. जो मैंने आपको बताया है
This is there in this slide. अभी डी इस प्रोसेस में सर्वे भी करते हैं सेक्शन 16 में, बट सर्वे इज ओनली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस. सर्च करते हैं प्रीमाइसेस, दैट इज आल्सो फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस. इतना ही नहीं, रास्ते पे कोई व्यक्ति चल रहा है ना, उसका भी सर्च कर सकती है ईडी अंडर सेक्शन 18, अगर ईडी को लगता है कि इसके पास कुछ है, कुछ छुपा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, आई वोंट गो इनटू देम. कभी पीएमएलए का डिटेल लेक्चर ओनली देम वन कैन एक्सप्लेन. सो दिस सर्वे सर्च प्रोविजंस आर बेसिकली फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, मैं अभी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. दैट इज द अदर पार्ट इन द पीएमएलए एक्ट, जहां पे नोटिफिकेशंस आए हैं. ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो पीएमएलए के वायलेशंस है एंड ऑल द सेक्शन 3, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर एवरीबॉडी. Okay, so that's what I said. PMLA as such applies for any and everybody, and it is applicable right from 1st July 2005. Okay, this is once again the definition of money laundering, just so that all of you all understand it properly. अब मैंने आपको इतना शेड्यूल ऑफेंस के बारे में बता दिया, इतना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में मैंने इतना बता दिया है. Now reading this will again be easy for you. Sorry, whoever directly indirectly attempts to indulge, assists, knowingly is a party, is actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime. केवल पैसे से संबंध नहीं है, उसके कोई प्रोसीड्स या कोई एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है. वो 1 करोड़ रुपया विच इज टेंटेड मनी, उसको अनटेंटेड करने में किसी ने कुछ पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसमें सेल्स दिखा रहा है, उसके बैंक में कैश डाल रहा है, एंड यू नो ये सो डूइंग सम गड़बड़ हियर एंड देयर, ताकि वो 1 करोड़ रुपया इन सो कॉल्ड लैंग्वेज ब्लैक का व्हाइट हो जाए, बैलेंस शीट में आ जाए. सम पीपल आर एडिंग एंड असिस्टिंग इन ऑल ऑफ दिस. कोई इसके डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहा है, कोई इसके कुछ प्रोसेस में मदद कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट खोलने में मदद कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट को मैनेज करने में मदद कर रहा है, शायद बैंकर भी मदद कर रहा है, आई वुडंट नो. नो सी द डेफिनेशन, जो भी इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है प्रोसेस या एक्टिविटी में, चाहे एक्विजिशन, यूज, कंसीलमेंट, चाहे हेल्पिंग इन द अनटेंटेड टू, सॉरी द टेंटेड टू अनटेंटेड, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, उन सब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई and the PMLA Act can come down with its complete force. Now friends, it is important for us to think कि chartered accountants कितना risk ले रहे हैं in these kind of situations. And friends, with all due respect, most of the time it is possible that the professional does not know only about the funds of the clients. Clients ने बताया मुझे ये आया है, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न तैयार कर लिया, आपने ऑडिट कर लिया, आपने उसको 15 सीएसीबी में मदद कर ली, आपने टीडीएस डिडक्शंस में मदद कर लिया, आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में उसे मदद कर लिया, बट बियॉन्ड दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग. But now they want us to do some due diligence and all that under the reporting entity concept. Anyway, coming back to the money laundering part, this is it. This is all that you should know as far as money laundering is concerned. Action taken by ED, adjudicating authority, tribunal, और कितने लोग क्या क्या करने पे इस दायरे में आ सकते हैं. But remember one thing, again and again I'm saying, scheduled offense है, POC है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जन्म लेगा. शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग जन्म नहीं लेगा. मनी लॉन्ड्रिंग पार्ट इज ओवर. Now comes the part where we are getting involved as chartered accountants, reporting entity. And I told you in the beginning, reporting entity क्या है ये? भाई FIU को थोड़ी सी पहले से इंफॉर्मेशन चाहिए on suspicious transaction, तो उन्होंने रिपोर्टिंग एंटिटी नाम की चीज बना दी. सो फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे इन अ लिमिटेड वे. तो ये हमें सिर्फ चैप्टर 4 हमारे काम का है, सेक्शन 11A to 15 है, और एक रूल्स है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हमारे काम का है. मैं सारे सेक्शंस आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, रूल्स याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर डिटेल्ड गाइडलाइंस टू कम फ्रॉम FIU. FIU विल गिव अस गाइडलाइंस कि भाई आपको क्या करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नाउ लेट अस सी. So this reporting entity concept is now what has disturbed chartered accountants, cost accountants, etc. Money laundering part is over, friends. That has been applicable to everyone. अब देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर वाले तो हेडलाइंस आई डोंट नो, मतलब कुछ भी कभी-कभी कैसे भी छाप रहे. CAs covered under financial transactions of PMLA executed on behalf of client.
Chartered accountants under the ambit of money laundering. भाई साहब money laundering में तो everybody was covered right from 1st July 2005. Finance Ministry brings CA under the PMLA Act, carrying out financial transactions of clients. Okay, to a certain extent, headlines have created a lot of panic in the minds of chartered accountants. कि क्या अब अभी हम PMLA के दायरे में आ गए? I've already given the answer of that. If the chartered accountant is covered under Section 3, yes, he's coming under PMLA. Now, reporting entity में what is something new that we have to do? So, Chapter 4 is important. बस आपको ये Chapter 4 ही याद करना है. And please don't, it's not to be कि हम कंठस्थ याद कर ले सब. No, nothing like that is required. Basically, Chapter 4 क्या कहता है? What is this reporting entity? किसको reporting करना है भाई और reporting करना क्या है? इसके बारे में information will be coming. Let's see what is Chapter 4 है. उसके पहले एक दो definition important है. 3rd में 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये जो आपके सामने स्क्रीन पे सेक्शन 21 SA6 है इसमें डाल दिया गया है and not all activities of a chartered accountant, certain limited activities. So now we are put into the category of designated business of profession and reporting entity means designated businesses. In short, अगर ये sections बहुत भारी लग रहा है, in short, chartered accountants are coming under the concept of reporting entity. ठीक है, चलो okay. Even intermediaries are reporting entity. देखिए स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स, नॉर्मल बैंकर्स भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी ये सब रजिस्टर्ड है, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में आते हैं. ओके. नाउ देयर आर टू नोटिफिकेशन, 3rd में का नोटिफिकेशन और 9th में का नोटिफिकेशन. देखते हैं जरा 3rd में का नोटिफिकेशन. अब उसके पहले गो बैक टू FATF. मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि ये सारी कहानी FATF से आ रही है. तो उन्होंने फरवरी 23 में रिकमेंडेशंस दिए हुए और रिकमेंडेशंस के ऊपर दे बीन वर्किंग. तो इनका एक रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन नंबर 22 पढ़िए. ये रिकमेंडेशन नंबर 22 FATF ने दिया है और इसकी भाषा देखिए. और अब जो नोटिफिकेशन व्हिच हैज कम ऑन 3rd में उसकी भाषा देखिए. यू विल फाइंड ऑलमोस्ट सिमिलरिटी. ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन नंबर 22 मेंशंस lawyers, notaries, independent professions, accountants, whenever they carry out transactions following, जो भी 5-6 आइटम में लिखी है, that is a recommendation of FATF. इसके बेसिस पे certain professionals, they are now coming under reporting entity. ये actual notification है. Sorry, font छोटा है. मैंने थोड़ा सा font clear करके लिख दिया है. इस notification को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना friends. It's little important. हो सकता है कुछ चीजें हमारे लिए स्लाइटली कंसर्न की है एंड कुछ कंसर्न की नहीं भी है. हम कर भी रहे हैं वो सब. वी आर डूइंग इट इवन अदरवाइज. इन द मीन टाइम फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं शुरुआत में ये बात कह दूं जरा ठीक रहेगा. हमें रिपोर्टिंग एंटिटी माना क्या है एज पर दिस नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पे है. तो एज रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द वे आई अंडरस्टैंड, हमें FIU को कुछ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. एवरी मंथ करना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर, जो भी हो. यदि हमने नहीं किया रिपोर्टिंग, लेट किया, मिस्टेक्स कर दी रिपोर्टिंग में, तो क्या PMLA एक्ट हमारे पे अप्लाई हो जाएगा? क्या ED हमारे घर ऑफिस में आके सर्च कर देगी, रेड डाल देगी, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट कर देगी, बेल नहीं मिलेगा, मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे? ये सब है फ्रेंड्स. वो सब तो PMLA वाले पार्ट में है. रिपोर्टिंग एंटिटी का पार्ट अलग है. रिपोर्टिंग एंटिटी में यदि वायलेशंस हो रहे हैं तो FIU नोटिस भेजता है, गिव्स यू शो कॉज नोटिस, सुनवाई होती है और नॉर्मली कभी एक कड़क ताकीद दी जाती है जिसे अपन वार्निंग कहते हैं, या FIU कहेगा ऐसे ऐसे रिपोर्ट बना के हमें दीजिए, या भविष्य में आप ऐसे ऐसे रिपोर्ट देना, या ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक डिफॉल्ट का 10,000 रुपया पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख फॉर एवरी डिफॉल्ट. और FIUs के ऑर्डर्स हैं ऑन द वेबसाइट कि कभी बैंक ने कुछ गलती कर दी रिपोर्टिंग में तो इस प्रकार की पेनल्टी होती है. बट ये कहना कि सेक्शन 16 के हिसाब से, सेक्शन 17 के हिसाब से, सेक्शन 18 के हिसाब से, विच आई जस्ट शोड यू, हमारे यहाँ सर्वे हो जाएगा, हमारे यहाँ सर्च हो जाएगा, नो, only as a reporting entity, no friends, we don't have to think like that. Only as a reporting entity, मेरे से कुछ डिले हो गया, गलती हो गई, मैंने नहीं रिपोर्टिंग किया तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे? No, with all due respect, I do not agree with that statement. That is all coming under section 3, which is something else. Now let us see, having said this,
लेट अस सी ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है एंड इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे. Financial transactions carried out by relevant person. Relevant person मतलब CA. Financial transactions. Okay. Transaction has been defined under PMLA rules. Financial transaction हम समझेंगे. So the first part is, there are three parts in this notification. Three parts. पहला part, financial transaction carried out by a CA on behalf of his client. So I should carry out a financial transaction on behalf of my client. पहली बात. दूसरी बात, इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी जरूरी है. और तीसरी बात, इन रिलेशन टू द फॉलोइंग 5 एक्टिविटीज. ये 5 एक्टिविटी के संबंध में यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन के दरमियान किसी क्लाइंट के बिहाफ पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाएगा, अन्यथा नहीं. इसमें ऑडिटिंग तो नहीं लिखा है, इसमें फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स तो नहीं लिखा है, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स नहीं लिखा है, ईटीडीएस के रिटर्न्स तो लिखे नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट रिटन, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन आल्सो, जो हमें समझना भी पड़ेगा. तो व्हाट आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो ये लोग बोल रहे हैं, कैरिड आउट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन रिलेशन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट के बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करता है? हाँ, अगर किसी क्लाइंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया और कहा आप ही कस्टमर ढूंढो, आप ही मेरी प्रॉपर्टी बेचो, आप ही पैसा कलेक्ट कर लेना, आप ही जो भी उसमें टीडीएस वीडीएस का झमेला है वो आप ही देखना, और आप ये पैसा 54 ईसी में इन्वेस्ट करना है कर लेना, और आप ये पैसा दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के 54 या 54F का बेनिफिट ले लेना, या आप ये पैसा मुझे अब्रॉड रेमिट कर देना 15 सीबी की कार्रवाई करके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है. And then the chartered accountant is carrying out certain financial transaction on the basis of that power of attorney. Yes, then you can say. पर कभी-कभी ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं भी दिया जाता है, लेकिन व्यवहार ही ऐसा है that the chartered accountant is actually managing all this client's money, he is managing the client's bank account, etc. See the second point, managing of client money, security and assets. Managing, जरूरी नहीं the chartered accountant should be a signatory in the bank account. Management of bank saving or securities account, managing of client money, securities or other assets. Other assets में तो सब assets आ गए. क्लाइंट की सिक्योरिटीज मैनेज करना मतलब क्या, मैं उसका डीमैट अकाउंट देख रहा हूँ, उसके डीमैट में ऑफ मार्केट ऑन मार्केट डिलीवरीज, मैं डिलीवरी स्लिप साइन कर रहा हूँ, क्या मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ ब्रोकर को, या एम आई मैनेजिंग ऑल सिक्योरिटीज, क्या मैं क्लाइंट के बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट क्या मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, वो म्यूचुअल फंड दे दो, इसको सरेंडर कर दो, ये इक्विटी शेयर्स ले लो, इसको बेच दो, उधर इन्वेस्ट कर दो, डीमैट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ भाई ये डिलीवरी दे दो, ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि भाई ये खरीदो ये बेचो, बैंकर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इसका पेमेंट आने दो, उसको चेक इशू कर दो, ये एसबा में रखो, एएसबीए में, ये आईपीओ के लिए. Am I doing all of that? Am I managing the client's money? Managing is a big word, friends. एक छोटा सा काम कर देना उसमें से may not be management according to me. ये नोटिफिकेशन अभी नया आया है, so I am open to interpretation, friends. It's not that my interpretation is ultimate, because FIU will come up with guidelines, but there are open areas over here. So only if a chartered accountant is doing financial transaction on behalf of his client in the course of profession. In the course of profession important है, मतलब यदि मैं मेरे फादर के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, so let's say that is not in the course of my profession. तो घर का काम है मैं कर रहा हूँ, मेरे फादर है, मेरे भाई है, so I can understand that can be an argument. But in the course of profession, buying and selling, managing of client money, management of bank account, organization of contribution for the creation, operation or management of companies. आप फंड्स अरेंज करके दे रहे हो फॉर द ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, बट आई डोंट थिंक सो दिस वुड मीन कि आपने कोई डेट सिंडिकेशन का काम कर दिया, आपने इक्विटी अरेंज कर दिया, सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट. बट लेट अस सी, द इंटरप्रिटेशन विल श्योरली कम फ्रॉम एफआईयू. लुक एट द फिफ्थ पॉइंट, क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, LLPs और ट्रस्ट, एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज. Friends, now I am asking a question to my own self, क्योंकि ये सारी 5 की 5 आइटमें जो लिखी है, if the CA is doing on behalf of the client, तो वो CA रिपोर्टिंग एंटिटी माना गया, और रिपोर्टिंग एंटिटी तो उसको कुछ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज लुकिंग आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी.
उसका बैंकिंग, he may not be the signatory, he may not necessarily be the signatory, but he is managing the companies. Now can we say that these are financial transactions carried out on behalf of the client? वो उस कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट्स आ रहे हैं, बैंक में डालना, चेक्स इशू करना, ईटीडीएस के रिटर्न्स फाइल करवाना, मिनट्स का काम, एवरीथिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is being handled by the chartered accountant. Now friends, I'm sure you all will say कि मेरा तो नाम कहीं भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेटरी नहीं है बैंक अकाउंट में, वो डायरेक्टर भी नहीं है या शायद डायरेक्टर है, शेयर होल्डर भी नहीं है या शायद शेयर होल्डर है. दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू एलएलपी एंड ट्रस्ट. सो ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्राइवेट ट्रस्ट, इट कैन बी अ पब्लिक लिमिटेड ट्रस्ट. तो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड द सीए इज नॉट देयर. तो इसमें कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट कर रहा है? And is the company to be treated the client, or is the LLP to be treated the client, etc., etc.? There are a lot of questions that are being asked. But friends, I want you to take you to FATF का ये recommendation पढ़िए. देखिए FATF क्या चाह रहा है. FATF ये चाहता है कि लॉयर, नोटरी, अदर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स ये कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरह करे इन सब चीजों के ऊपर, और ये ट्रांजैक्शंस में, that is the second part of the interpretation, यदि कोई suspicious transaction लग रहा है as a reporting entity, आप FIU को report करें. I'll just come to that. So the broad objective is to see whether chartered accountants are doing financial transactions on behalf of their client. That is the main thing. I don't want to play with words कि मेरे पास तो power of attorney नहीं है, मेरे पास authority नहीं है, but effectively if it is found that the chartered accountant is handling things, बैकएंड में वही देख रहा है, सब कुछ करता धरता वही है, सब कुछ उस कंपनी में उसी के थ्रू हो रहा है, उस कंपनी के स्टाफ को, उस कंपनी के एम्प्लॉय, जिसको भी, इफ यू कॉल एवरीबॉडी विल यूज वन वर्ड ओनली, वो साहब उन्होंने पेमेंट दिया, हम तो उनसे बात करते हैं, हमको तो वही मालूम है कंपनी में. दैट मे गिव एन इंप्रेशन दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मैनेजिंग द कंपनी, एलएलपी और ट्रस्ट. वंस अगेन व्हाट आई वांट टू से इज दैट थ्री पार्ट्स: चार्टर्ड अकाउंटेंट carrying out the financial transaction on behalf of the client in the course of business or profession, and in relation to these 5 items, only then he's coming under RE. Otherwise, he's not coming under RE. And with chartered accountants, those who are holding a certificate of practice, individual या firm name के through पे, CSN company ये भी आ गए हैं. This is once again the definition of reporting entity. So what reporting is expected from chartered accountant? By reporting करना क्या है? अब आपको देखना पड़ेगा चैप्टर 4, सेक्शन 11A से लगा के 15 तक. और इसमें से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी कर रहे हो. जैसे कि सेक्शन 11A क्या कहता है? सेक्शन 11A कहता है कि जो भी एंटिटीज, एंड एंटिटी मींस क्लाइंट, तो जो भी आपके क्लाइंट है ना, उनका आप आधार अपने पास होगे, तो वैसे भी आपके पास आधार है, आधार पैन लिंकिंग तो आपने ही किया है, आपके पास तो सभी क्लाइंट्स के आधार है. दिस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोस 5 ट्रांजैक्शन में द सीए इज इन्वॉल्व्ड. आपके पास इनफैक्ट सभी क्लाइंट्स के आधार है. और व्हाट एल्स यू हैव टू रिपोर्ट? तो एवरी RE मींस अ रिपोर्टिंग एंटिटी. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्लाइंट का हुआ है, कौन सा ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मोर प्रॉपर्टी और मैनेजिंग एटसेट्रा, I'll come to it फ्रेंड्स. तो वो ट्रांजैक्शंस की जानकारी वो सीए रिपोर्टिंग एंटिटी अपने पास रखे, और ये ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन वो FIU, डायरेक्टर मींस FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन द ED, उनको ये ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ जानकारी दे. कौन से ट्रांजैक्शंस? I'll just tell you according to my understanding. So all this kind of information, which is not very difficult, and you have to maintain that KYC of your clients for 5 years, और जो particular transaction भी हुआ है, whatever is the financial transaction done, उसकी भी जानकारी आपको 5-5 साल तक रखनी पड़ेगी. Okay. अब ये ED वाले यानी कि FIU वाले रिपोर्टिंग एंटिटी से क्या मांग सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. भाई आपने ये ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट किया है, तो आपके पास क्लाइंट का KYC आधार वाधार है, लाइए. हाँ लाइए. क्या ट्रांजैक्शन था उसकी जानकारी दीजिए, ये था, ये बैंक था, ये था, व्हाटएवर, दैट इज ऑल फाइन. कभी कभी द ED आल्सो एक्सपेक्ट्स आप क्लाइंट का और ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करोगे, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, बट एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस इज ओनली फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो मैंने इस स्लाइड में नीचे लिख दिया है. Don't worry about it, friends. Don't get too stressed out about all of this. Or the FIU, they can ask inquiry from the RE के भाई
ये ट्रांजैक्शन है, इसमें आपका क्या रोल था एटसेट्रा, दे कैन आस्क. बट वंस अगेन फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज ओनली द रिपोर्टिंग एंटिटी पार्ट. आपको वो पीएमएलए में मुझे बुला लिया, पीएमएलए में मुझे अरेस्ट कर देंगे, वो आपको चिंता नहीं करना है. एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी और आस्किंग, और रिपोर्टिंग एंटिटी के हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेट चला गया रिटर्न, वन वो कंप्लायंस होएगा किसी पोर्टल पे. यू आर डूइंग जीएसटी कंप्लायंस, यू आर डूइंग इनकम टैक्स कंप्लायंस, यू आर डूइंग प्रोफेशन टैक्स कंप्लायंस, यू आर डूइंग आरओसी कंप्लायंस, एक और कंप्लायंस होएगा, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड, काम बढ़ गया. तो अगर एफआईयू को लगा कि अरे आपने कंप्लायंस प्रॉपर्ली किया नहीं है, तो भाई आपको वार्निंग देंगे. लुक द स्लाइड्स में लिखा है, वार्निंग दे देंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ज्यादा फाइन लगाएंगे. दैट्स इट. अभी आपने क्लाइंट का अगर कुछ इंफॉर्मेशन ईडी को दे दिया तो आपके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी. और what is the reporting to be done, which I'm going to from my experience I'll tell you what is the reporting we have to do. उसके बारे में जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट will give along with consultation of RBI. So we are waiting for the guidelines to come. So what reporting is expected? Once again जरा पढ़ लीजिए. Chartered accountant carrying out financial transaction on behalf of the client in the course of profession. Relation to all this, only these are covered as reporting entity, and not all cases. So typically audit is not covered under that. Filing of IT returns वगैरह, no, it is not covered. तो आपको चैप्टर 4A के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. अभी रूल्स के बारे में, तो रूल्स में इतने 10-11 रूल्स हैं, ठीक है. इनके बारे में यू हैव ऑल द टाइम टू रीड, डोंट वरी अबाउट इट. Now comes the definition of transaction. I told you in the circular, in the notification, financial transaction is mentioned. What is transaction? ये रहा definition transaction का. But friends, don't be too stressed out about the definition of transaction also. But now a little important part, something that I've been telling all of you. कि चलो मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि मैं एक रिपोर्टिंग एंटिटी और मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट किया है, फॉर बाइंग एंड सेलिंग अ प्रॉपर्टी, फॉर मैनेजिंग फंड्स, फॉर मैनेजिंग कंपनी, या फॉर मैनेजिंग द बैंक अकाउंट ऑफ माय क्लाइंट, मैंने किया है. तो मुझे क्या रिपोर्टिंग करना है? मैं क्या आपको लिख के क्या दूं? आप क्या चाहते हो? पूरा बैंक स्टेटमेंट आपको दे दूं, या पूरी कंपनी का क्या दूं? मैं कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मैं आपको दे दूं? व्हाट डू यू वांट? तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली रिपोर्टिंग एंटिटी, नॉर्मली बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, नॉर्मली इनको क्या रिपोर्टिंग करना पड़ता है? चलो उनकी बातें तो देखते हैं कि उनको क्या रिपोर्टिंग करना पड़ता है. तो बैंकर्स को सीटीआर रिपोर्ट करना पड़ता है, कैश ट्रांजैक्शंस. फ्रेंड्स, नॉर्मली 10 लाख से ऊपर का अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश डालना निकालना होता है, तो बैंकर्स आर रिपोर्टिंग इट. मे नॉट बी, करंट अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं. तो कैश ट्रांजैक्शंस बैंक वाले रिपोर्ट करते हैं, सीरियली कनेक्टेड कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओस के 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं ये लोग. काउंटरफीट पैसा आया उसका रिपोर्टिंग. अब ये देखिए, नाउ ऑन द स्लाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई फील ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग, ये ट्रांजैक्शन, दिस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ये अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एज रिपोर्टिंग एंटिटी शायद हमारे पे ये जवाबदारी आएगी. दैट इज द वे आई एम थिंकिंग, बट वी हैव टू वेट फॉर द एफआईयू गाइडलाइंस टू कम. अब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है और ये बैंक वाले कर रहे हैं. हाँ, आपके और मेरे बैंक अकाउंट में और सभी बैंक अकाउंट्स में बैंकर का काम है एसटीआर को रिपोर्ट करना. अब एसटीआर का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर बैंकर को लगा या स्टॉक ब्रोकर को लगा या एनी अदर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगा, और अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, any transaction which is giving rise to reasonable ground of suspicion कि शायद ये ट्रांजैक्शन में शेड्यूल्ड ऑफेंस होने की संभावना है, या अगर बैंकर या किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को लगा कि ये ट्रांजैक्शन कुछ अनयूजुअल है, अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी का है, ये ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक रैशनल क्या है, इसका बोनाफाइड किधर है ट्रांजैक्शन का, ये क्या कर रहा है, डाउटफुल लग रहा है, सस्पिशन लग रहा है, that can come under the category of suspicious transaction. और suspicious transaction की व्याख्या अलग है. चार्टर्ड अकाउंटेंट ए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बी की व्याख्या अलग होगी. That is why they have given a definition of suspicious transaction. What we have to do as chartered accountant, any financial transaction carried out on behalf of client concerning sale of property, managing of funds and managing of bank or management of company etc., हमें उन पे ही ध्यान देना. From those transactions, if any suspicious transaction is being generated या आपकी नजरों में आ रहा है, then I think
that may have to be reported to the FIU. So what is suspicious transaction is written over here. Bankers and others also have to report this. हमें reporting नहीं करना पड़ेगा. For example, see the last item, the registration office, Inspector General of Registration, they are also reporting entity. और 50 लाख के ऊपर कोई भी property का व्यवहार हुआ हो, they have to report it to the FIUs. 50 lakhs के ऊपर आपकी AIS में भी तो आता है वो सारा information. So I think so reporting of suspicious transaction relating to only those 5 categories, those 5 items. I think so that is what is going to be expected from chartered accountants as reporting entities. And then plus you have to maintain a lot of information regarding suspicious transaction. आपको लगा तो उसका nature, you have to maintain all these details, and you'll have to maintain the details of your clients also and furnish information to the director. Means the FIU शायद 15th of the next month के पहले आपको information देनी पड़ेगी या within 7 days देना पड़ेगा, etc. What is the objective? The objective is FIU को suspicious transaction time पे मालूम पड़ गया तो वो उस information पे काम करके other intelligence agents की चीज के साथ काम करके या share करके कोई भी scheduled offense को जल्दी से पकड़ ले या तुरंत उसके पर कार्रवाई करें, और यदि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंगल्स जो ईडी को देखना है वो देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग वन मोर थिंग. रिपोर्टिंग एंटिटी की हैसियत में अगर मुझे लगा कि कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, और मैं फिर से एक बार आपको डेफिनेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ये देख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट कर रहा हूं डज नॉट मीन मैं खुद ही पीएमएलए के दायरे में आ जाता हूं, unless the chartered accountant himself is knowingly aiding, assisting, the definition of section 3, तो आएगा, not otherwise. So you have to give all this information to the FIU, and आपको clients का due diligence में क्या maintain करना है. For example, client individual है तो आपके पास पैन आधार होना चाहिए, वो तो वैसे भी हमारे पास होता है. Client company है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA वगैरह, AOA, आर्टिकल, पैन वैन होना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर दैट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो वैसे भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंटेन, जो फ्रैंकली वैसे भी आप रखते ही हो अपने पास. Okay, so I won't get into this much of nitty-gritties. Once again, I'm on the notification. When do you become a RE? You mean the chartered accountant, you and me as the chartered accountant. Whenever the chartered accountant is carrying out financial transaction on behalf of client, course of profession, for these 5 different items. Okay. Now let's take some examples. These are my own examples. It's not that there are answers to all these examples, because this is something new and I've told you the FIU guidelines are not out. ये guidelines क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. But what I want to say is that supposing the client is the CA is taking a power of attorney, जो मैंने भी example लिया from the client to carry out financial transaction. तो उस financial transaction के basis पे the CA is doing some buying and selling of real property or managing of funds. Well, then it is possible that he will come under the RE. Supposing the supposing the chartered accountant is a signatory in the bank account. Am I clear enough? Yes, Rajesh. Sorry. So supposing the chartered accountant is a signatory in some bank account on behalf of the client. Here you have to be careful, friends. So managing the bank account. So that is managing bank account. Managing. Sorry, there's some disturbance. Okay. Supposing the chartered accountant is incorporating or forming companies, which many are doing. Not to say that just in incorporating or forming a company, is there a financial transaction involved? Okay, we will also see the circular of 9th May, friends. इसके बाद एक और circular है, that is not for chartered accountant, but that is for everybody. Everybody. Let's say the chartered accountant is collecting taxes in his escrow tax account. No, I'm not on the code of conduct, friends. There are certain things which are violation of the code of conduct or the ethics. But supposing there is a chartered accountant who's opened a bank account और उसमें client से पैसे आ रहे हैं और वो tax के payments जा रहे हैं. So are you managing funds for the clients? Maybe somebody will argue, I'm not managing. I've just taken in the bank account at the instructions of my client. I'm making a payment for income tax specifically.
सपोजिंग क्लाइंट ने आपको कहा कि ये 2 लाख रुपए अकाउंट में डाल देता हूं मैं, जिसका जो भी टैक्स भरना है आप डिसाइड करो और आप भर देना. नाउ कैन आई से आर यू मैनेजिंग द क्लाइंट्स फंड्स? उसमें से कुछ बच गया, उसको वापस दे दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. The chartered accountant is collecting TDS under 194I. Now, financial transaction on behalf of the client, normally buying and selling a property में हम क्या करते हैं? We don't do buying and selling on behalf of the client unless it is being done. But yes, clients very often tell us के buying and selling का काम हो गया है, वो जो 194I में या 195 में 1% या NRI का जो भी 23-24% TDS काटता है, वो काम आप कर दीजिए. So that is where maybe the chartered accountant is taking money into his account and then paying TS and TDS and filing the tax returns. Sorry, TDS returns 26 whatever 26 QB or whatever it is. या 195 का जो भी compliance करना है वो CA कर रहा है. या उसने client को चालान दे दिया और वो ही भर रहा है. Chartered accountant is not doing any financial transaction. We are having these kind of scenarios. Now let's see one more. The chartered accountant is physically managing the client's money for investments. The example I took. Okay, he's actually managing the money. He may not be a signatory, but he's basically managing the client's money for investments across wherever, whatever he wants to do. Or the chartered accountant is offering portfolio management services. यानी कि broad portfolio services offer कर रहा है. Bank management, वो bank account chartered accountant के अंडर ही है. Demats उसके अंडर है. बैंक की चेकबुक साइंड उसके अंडर है. लॉगिन आईडी सब उसके पास है, पासवर्ड्स उसके पास है, ओटीपी शायद क्लाइंट से ले रहा है. देयर कैन बी मेनी सिनेरियोस आई कैन जस्ट थिंक ऑफ. These are cases which many of them may fall under financial transaction carried out on behalf of the client for buying and selling a property, managing bank account, managing this that. And if yes, the CA becomes a RE. अब ये देखिए, chartered accountant acting as insolvency professional. So insolvency professional में appoint हुआ because of NCLT for managing everything of a company. और मुझे fees मिलने वाली है, I don't do it for free. So chartered accountant doing financial transactions on behalf of his client in the course of his profession in relation to management of a company. Ingredients तो सारे serve हो गए हैं. But let us wait for the guidelines because चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो ऐसे आईपी बनते हैं, ट्रस्टी भी बनते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनते हैं, एग्जीक्यूटर भी बनते हैं, लिक्विडेटर भी बनते हैं. एंड एज ए एग्जीक्यूटर एंड लिक्विडेटर ही हैज टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. So you mean they will become all reporting entity? And even if they become reporting entity, even if they become, चलो कोई बात नहीं, तो करना क्या है? रिपोर्टिंग ही करना है. और किस चीज का रिपोर्टिंग करना है? Which according to me suspicious transaction as per guidelines coming from FIU, if at all that happens. Clients 15 CB का काम करे और कई बार 15 CA करे. And friends, now a little concern by me. Use of digital signatures by chartered accountant. Digital signature किसी की साइन होती है. It carries value. It carries legal value. And if that is being used by the chartered accountant under instructions of the client or whatever for carrying out certain financial transactions in the course of business, in the course of management of a company, in the course of managing the bank account, managing assets, buying and selling a property. Am I right in saying that this notification of RE, reporting entity, is applying to me and I have become an RE? Using digital signatures has to be very discreetly and absolute precaution के साथ under instructions of the client for specific things that could be done. That may be done, but it's always under instruction. And the client normally has to use his DSC and do that. But in real life, we do see situations के clients को कभी-कभी DSC use करना, apply करना, operate करना नहीं आता है. It happens. So maybe they need some assistance from chartered accountants. So there can be many such cases which will be borderline to decide whether I'm becoming as an RE or I'm not coming as an RE as per this notification. This is just what I've just told you, friends. I just tried to cover it in these slides. So the question is, will a CA be responsible for all the consequences of transactions of his client under PMLA? No, I'm not saying that. All that I'm saying is that chartered accountant is going to become an RE if he comes into this category. Please don't be under the impression कि client कुछ भी करे तो क्या मुझे PMLA में involve कर देंगे? No. चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी व्यक्ति PMLA के सेक्शन 3 में तभी इन्वॉल्व होगा जब वो सेक्शन 3 के दायरे में आता है. As a reporting entity, just because I have become a reporting entity, तो मेरे पे PMLA apply हो जाता है with all the force? No, it does not. Section 3 doesn't apply to me by default. Yes, as a RE, I may be doing some reporting work.
तो क्या मुझे सर्वे, सर्च, अरेस्ट, समन वगैरह सब किया जा सकता है just for some defaults or delays in my reporting and as an RE? No, friends, with all due respect and to the best of my understanding of the subject, no, that is not the consequence which is coming down. Otherwise, आपकी और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, बैंक वालों पे तो 50 प्रकार के रिपोर्टिंग है, CTR, STR, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, NPO के ट्रांजैक्शंस, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के ट्रांजैक्शंस देने पड़ते हो, उनके ऊपर तो कितनी जवाबदारियां रिपोर्टिंग की। तो ऐसे तो कितने केसेस हो गए, तो बेचारे बैंक वाले तो PMLA ही फंसे रहेंगे हमेशा। नो नो, रिपोर्टिंग एंटिटी के अगर कुछ वायलेशंस हो तो उसके ऊपर फाइन, पेनल्टीज वगैरह लगाई जा सकती है। सो वी आर गोइंग टू रिपोर्ट टू FIUs once again. Basically, according to me, we are going to report only suspicious transactions concerning those 5 categories to the FIU. Now, I don't feel that we are covered under auditing. वो सर्कुलर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, इनकम टैक्स, GST वगैरह, रूटीन ETDS वगैरह के लिए नहीं लिखा है। But friends, if I'm managing the client's bank account, I'm managing his money, means supposing me opening an account और उसमें मैं टैक्स का पैसा ला रहा हूँ and I'm making payments, we have to see how these things are going to be clarified by FIU. लेकिन ये थोड़े से ग्रे एरियाज है, बॉर्डरलाइन एरियाज है, where we'll have to be extremely careful. And as a chartered accountant, if you're taking any power of attorney, any mandate, any letter of authority from your client, उसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का अथॉरिटी दे रहे हैं तो भाई दे रहे हैं, नहीं तो बी वेरी क्लियर इन द टर्मिनोलॉजी के क्या आपको अधिकार दिया जा रहा है, टू डू व्हाट। That will decide whether you're coming as a RE or you're not coming under the RE category. But normal work of IT return, PAN application, tax, linking, ye wo, accounts writing for clients, attestation report, certification, I don't think so. To the best of my understanding, ye sab RE mein aayenge. Ho sakta hai there may be some borderline cases. We have to decide based on the notification whether we are coming into that. Now, FIU में शब्द बार बार बोल रहा हूँ, गाइडलाइन में शब्द बार बार बोल रहा हूँ। Friends, let me show you an example. 7 मार्च 2023 को ऐसा ही एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में those who are working सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको बोला गया now you are going to become an RE. Virtual digital asset to subsection 47A, all service providers under VDA, they became RE. 7 मार्च को, और 3 दिन के अंदर 10 मार्च को FIU ने उनके बारे में डिटेल गाइडलाइंस, ये रहा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे, एंड दिस इज द डिटेल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीट टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसके ऊपर गाइडलाइंस निकाल दिए टू होम, फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज। कौन से रिपोर्टिंग एंटिटीज? प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू VDA। और ये उनके डिटेल गाइडलाइंस, शायद स्क्रीन पे बहुत छोटे छोटे नहीं देखेगा, बट फ्रेंड्स आई एक्सपेक्ट कि इसी तरीके से FIU will come up with detailed guidelines for reporting entities, namely chartered accountants, for those 5 transactions only. So that is about third May का notification. जब तक ये notification को हम समझे और जब तक न्यूज़पेपर को पढ़े और डर जाए and all that whatever has been happening, तब तक एक और notification आ गया 9th May का, and this notification is applicable for all. I'm repeating, for all, including us obviously. Let's take a look. ये रहा नोटिफिकेशन छोटे अक्षरों में, अब ये थोड़ा सा बड़े अक्षरों में। अब देखते हैं अगेन नोटिफिकेशन अंडर 21SA6, वही रिपोर्टिंग एंटिटीज, डेजिग्नेटेड पर्संस। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, following some 5 activities carried out in the course of business on behalf of for another person, by whom nahi likha hai, by anybody. This will be an activity under 21SA designated, and this will be, all these people will become reporting entities. Chalo bhai, kaun si activities? It is activities, it is not financial transaction, it is not transaction, it is only activities carried out in the course of business on behalf of another person. थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनी LLP, यानी कि आपने किसी कंपनी या LLP को फॉर्म किया है, ये तो काम प्रोफेशनल्स भी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर रहे हैं, शायद कोई नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई ग्रेजुएट भी कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी शायद कर रहा है, शायद, तो वो भी आ गया रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, secretary of a company, acting as a partner of a firm or a LLP, or not only acting, arranging for another person to act as a director,
arranging for another person to act as a partner of a firm or an LLP हो तो खुद नहीं बन रहा हूँ और किसी को बोल रहा हूँ जरा बन जाना please, you know, arranging for someone else to act. Now friends, normally ये शब्द जो है ना, what happens in Mauritius, in Hong Kong, in Singapore, in Cayman Islands, in Cyprus, many other places, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं, हम यहाँ पे आपकी कंपनी बना देंगे, वो सीए के एड्रेस पे ही, उसके ऑफिस के एड्रेस पे ही, हम अपनी तरफ से आपको एक डायरेक्टर भी दे देंगे, इनिशियल कैपिटल हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, एंड देयर आफ्टर वो बिल बना के देते हैं और उनको लमसम अमाउंट क्लाइंट पे करता है. यानी कि वहाँ पे कंपनी ने बनाना बड़ा इजी हो जाता है. समटाइम्स नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. उनका ही एड्रेस, उनका ही एक डायरेक्टर, वही मेमोरेंडम आर्टिकल्स बना रहे हैं, वही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, वो बैंक अकाउंट भी खोल रहे हैं और उनका डायरेक्टर सिग्नेटरी, उनका डायरेक्टर. We in India normally don't offer these services, thank God. Normally, to the best of my understanding, I may be wrong. अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये भाषा समझिए, एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट, एक्टिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, सेक्रेटरी और पार्टनर ऑफ अ फर्म. यानी कि डायरेक्टर आ गया, सेक्रेटरी आ गया, पार्टनर ऑफ अ फर्म आ गया, पार्टनर ऑफ द एलएलपी आ गया, रिपोर्टिंग एंटिटी. और शायद इन सब लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, शायद इन सब रिपोर्टिंग एंटिटीज को भी शायद सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना पड़ेगा. नो, इट इज वेरी स्ट्रेंज. मैं ही पार्टनर हूं फर्म का और मैं फर्म की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करूं. Anyway, let's see. Providing a registered office address or any accommodation address or any address to a company LLP free of cost. You see those foreign chartered accountants, they sometimes provide their own address, but they don't make a rental agreement normally. तो अगर इंडिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का प्रोविजन करके दे रहा है क्लाइंट के लिए, या any business address, any communication address, not necessarily registered office, and the chartered accountant is not entering into a leave license agreement or a rental agreement or a lease agreement with the client, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी में आ गया. हाँ, अगर आपने लीज एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट बनाया, देन इट इज ओके, क्योंकि आप भाड़े पे तो जगह दे ही सकते हो ना. एक्टिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज अ ट्रस्टी, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रस्ट. ऑल द ट्रस्टीज आर बीइंग कवर्ड एज आरई. क्या किसी और को कहा कि भाई ट्रस्टी बन जाओ? आरई, रिपोर्टिंग एंटिटी. एक्टिंग एज अ नॉमिनी शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. शेयर होल्डर है, एक्सपायर्ड नॉमिनी शेयर होल्डर में बन गया. तो फ्रेंड्स, 9th मई का तो नोटिफिकेशन और भी ज्यादा ब्रॉड है, और भी ज्यादा वाइडली वर्डेड है. इसमें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शब्द भी नहीं वापरा है. इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ये सीएस पे अप्लाई नहीं हो रहा है. इट इज कमिंग टू एवरीबॉडी, बट दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर आपने कोई जगह लीज पे दिया है. व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, इफ इट इज ऑन लीज देन इट इज परमिटेड. If it is carried out by an employee on behalf of the employer, then it is permitted. And when you form a company, you give a certification under 7(1)(b) of the Companies Act. आप सबको पता होगा, but I have produced that form also. I think so. It is INC 8. तो INC 8 के लिए अप्लाई नहीं होता है, and it is not applying for intermediary. But other than these 4 exceptions जिनके ऊपर RE अप्लाई नहीं हो रहा है, coming back to the main slide, आप देखिए the wording is very vast, covering all these people as RE. And I'm repeating again and again, friends, RE doesn't mean आप section 3 के दायरे में आते हो. If the person actually is involved in section 3, then only comes under the PMLA with all its might. Otherwise, he's only an RE and you only have to do reporting to the FIU. ये वो INC 8 का format है. So, chartered accountant carrying on following activities on behalf of for another person, not necessarily client, on behalf of any other person. Acting as independent director, partner, trustee, providing some office address free of cost, not this thing. Friends, then all that is getting covered under RE. इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स में भी कुछ संशोधन किए हैं 7 मार्च को, जिसमें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस या एनपीओस के डेफिनेशंस में कुछ चेंज किए. तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बता दिया है that this is because of FATF recommendation updated up till February 23. इसका recommendation जो है, देखिए recommendation 22 which I've already shown you. I've already shown you. इन्होंने ये recommendation तब दे दिया था. And आप लैंग्वेज देखिएगा नोटिफिकेशन का almost the same. But now friends, my concern is recommendation 23. ये 22 नंबर का recommendation है. Customer due diligence आपको maintain करना है. This is what they have mentioned. That is why यदि reporting entity को only customer due diligence करना है, then friends I would be a very happy person. Client का PAN, आधार वो तो सब मेरे पास है. We are all ready for a reporting entity because we have everything. But as a reporting entity, if they want us to report suspicious transaction, then we will have to be slightly careful.
But that is recommendation number 22. What is recommendation number 23? That is the next slide. I have some concerns on that. ये देखिए recommendation number 23. क्या लिखा है? If all these people enter into financial transactions, countries are strongly encouraged to extend reporting requirements to the rest of professional activities of accounts, including auditing. This is recommendation number 23. Only time will tell us where things travel, whether auditors will also becoming reporting entities or they will not become. I wouldn't know, but this is it. There is also something known as the Egmont group, जो मैंने आपको बताया था, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, FIUs जो FATF में है, और उनके FIUs they share intelligence amongst themselves. So friends, by becoming a reporting entity, is there any cause of concern? I would say no, no cause of concern. But yes, एक compliance burden हमारे पे शायद अवश्य बढ़ जाएगा if we are coming under these specified categories. Only if you are coming under these specified categories, which I told you, 3rd May का notification में 5 category और 9th May में जो भी 5 categories है, then there will be some reporting. What is the reporting? FIU will tell you. For non-reporting or for faulty reporting or delayed reporting, the way I see is there would be a notice, there may be hearing, there may be warning given to us or some fine imposed for us. But only for reporting entity, आपने कुछ STR को प्रॉपर्ली नहीं रिपोर्ट किया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्वे सर्च हो जाएगा, अरेस्ट कर लेंगे, PMLA में बंद करवा देंगे एंड ऑल दैट. बाय दिस डिफॉल्ट वी डोंट कम अंडर सेक्शन 3 एज सच unless there is more involvement of coming under section 3. And it is also expected that the professionals reporting entity, अगर वो suspicious transaction STR, suspicious transaction report STR, अगर वो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं तो जाके क्लाइंट को बोलेंगे नहीं भाई मैंने तेरा ऐसे ऐसे STR रिपोर्ट किया है, उसको बोलते हैं टिपिंग. तो टिपिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डन. तो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चिंता है इसके बारे में, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट फ्रेंड्स, मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें ग्रेटर कंप्लायंस प्रैक्टिस होने वाला है एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी रेडी टू डू दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी कंप्लायंस. लेकिन अब ये तो ED को करना है, वी हैव टू रिपोर्ट टू ED, मींस FIU इज अ पार्ट इज लेट्स से कमिंग अंडर द ED ओनली. सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट work for all of us on this compliance part of work. PMLA practice अलग भी है section 3 की, but this compliance is going to be a great area for all of us to work, and the services of chartered accountant will come very, very handy in this. On this note, I thank everybody for listening to the whole thing patiently, so that we get an idea of what is heading, what is in store for us, what are we perhaps expected to do. In a few days, we may have the FIU guidelines also. So let's wait and watch for these things to come up and take a conscious decision and not just be afraid that yeah, again PMLA is applying on everybody and things like that. No, let's not be carried away just by these words. Thank you so much, sir. Thank you, Rajesh bhai. Thank you for enlightening us. Actually, वो notification पढ़ने के बाद actually डर गए थे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग कि PMLA में कहाँ पे आ गए, अभी ED का रेड होगा या क्या होगा मालूम नहीं, पता नहीं. और अपन ऐसा क्या काम कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिसके कारण से अपने को उसमें डाल दिया है, या मैं ऐसा क्या काम नहीं कर रहा हूँ जो बाकी के लोग कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, वो भी पता नहीं चल रहा था. लेकिन आपने काफी सारा क्लैरिटी यहाँ पे लाया है. थैंक यू सो मच. आई रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल मेंबर पीयूष छाजेड़ जी फॉर दिस मीटिंग. थैंक यू सो मच सर. नाउ इफ यस सर, you want to say something, sir? No, sir. Go ahead. If anybody is having any questions, please mention them in the chat box, or you can unmute yourself and ask the question directly to Rajesh sir. Vidit bhai, are there any questions in chat box as of now? Sir, there is a question in chat box. कि lawyers को include क्यों नहीं किया? FATF में there was original guideline in FATF that lawyers are included, but thereafter it didn't came in. Everybody is more worried about who is included and why they are. Of course, yeah. I can understand. But friends, let's understand one thing. जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमारी कंट्री का म्यूचुअल इवैल्यूएशन होने वाला है नवंबर 23 में, और अराउंड अप्रैल 24 में FATF की प्लेनरी सेशन होने वाली है. तो कंट्रीज का रेटिंग्स होता है, रेटिंग्स के बेसिस पे कई चीजें आधारित होती है. वर्ल्ड बैंक के हमारे क्रेडिट, बहुत सारी चीजें FATF रेटिंग्स पे आधारित होती है. सो दैट इज व्हाई दिस एक्सरसाइज इज हैपनिंग फॉर अ कंट्री लेवल. एंड ऑन फाइनेंसेस, अगर फाइनेंसेस में किसी एक प्रोफेशन का नाम आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही नाम आता है, वेल वर्स्ड इन फाइनेंशियल इश्यूज.
शायद इस दृष्टिकोण से whether they bring lawyers or don't bring lawyers, I'm looking at things from our own perspective. हमें अगर ये कहा गया है, we should do the compliance as an RE. जी. There is another question. Can a CA who is a IP and managing affairs of the corporate debtor is RE? I think so. They may not come under that. I only did a little bit of analysis of the whole thing, but as I understand, from an institute level also there will be certain representations, there will be meetings, guidelines निकलेंगे, and in this process maybe on the RE parts काफी exclusions भी हो सकते हैं. In the sections also there is a provision that central government may exclude certain classes of people as REs, as reporting entities. So I'm quite sure on certain areas they may think and ponder about it कि IPs are acting under the NCLT provisions, under the IBCs, so उन्हें आरई के दायरे में, क्योंकि कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, उनके सर पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं और ये कंप्लायंसेस बढ़ेंगे. आई थिंक सो मे बी इट्स पॉसिबल दे मे नॉट परहैप्स कम अंडर द इशू ऑफ आरई, बट लेट अस वेट फॉर द गाइडलाइंस. Rajesh, can I add to this? जी. Yeah, this is Rekha Shah. I'm an Yeah, please insolvency ask your question, professional also. Yeah, I don't have a question as such because that was my question, which Rajesh bhai have answered. I just wanted to add something into it because the insolvency professionals are regulated by different institutions. It's not by ICAI, you know, though they are chartered accountants, because the insolvency professional can be a lawyer, can be CS or anybody, CMA also. So at the same time, we have to understand that this notification includes chartered accountant. Now, the definition of chartered accountant, as Rajesh bhai has mentioned, there has to be a member and having a COP. The COP is given by the ICAI for the CAs. Similarly, for IPs, also the certificate of practice that is called as the AFA, which is given by the IPAs. So these two things are completely independent and mutually exclusive. It doesn't control each other. So that's how I look at it, because I work as an IP and liquidator also. So this is what I just wanted to add. Thank you. I will just add one more thing over there. PMLA makes section 71, which is, you know, the provisions of this act shall be, you know, even if it is not inconsistent with the provisions of any other act for the time being enforced. इस type के provisions normally punitive laws में होते हैं. So that kind of a provision is also there in section 71 of the PMLA Act. Nevertheless, you got a good point, and I think so इसका clarification कुछ समय में शायद हो जाएगा. जी. Rajesh bhai, one question. हीराचंद जी. Sir, दोनों notification whether they are in force. In force in the sense, the very fact that they are notified they are in force. आपका शायद question ये है कि if they are in force, then what exactly is the reporting that you want from us to do? What is the format? Is it going to be an XML format or what format? What is the frequency? What is the authority? Where is the portal? Do we have to do it in Excel? What are the guidelines? Perhaps this is your question, and this is not come. This is still not come. इसलिए मैंने वो एग्जांपल आपको VDA का बताया कि VDA का नोटिफिकेशन आ गया था 7 मार्च को, और 10 मार्च को तो उनके गाइडलाइंस भी आ गए. एंड देन यू नो FIU हैज वर्कशॉप्स, वो ट्रेनिंग देते हैं कि भाई हमें आपसे ये चीजें चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह एवरी मंथ में आप एक एक्सेल में या किसी में रिपोर्टिंग करके इस तरह अपलोड करना है, हार्ड कॉपी मेंटेन करना, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज स्टिल अवेटेड, दैट पार्ट. Kinjal Shah is asking you one question. Hello. Ji. Can you guide whether while doing KYC, RE will also be required to do end beneficiary verification as per this financial intelligence unit guidelines? That's something nice which Kinjal has asked, which maybe I missed out. Is there also at places which they mentioned in chapter 4 and in the rules, they mentioned about significant beneficial owner. Sorry, they have used the word beneficial owner. I should not use the word significant. They use the word beneficial owner. यानी कि हमें जब क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस करना है तो हमें बेनिफिशियल ओनर भी कौन है बताना है. दैट इज व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड. मैं इसे कोरिलेट करता हूं, आई थिंक सो, इफ आई एम राइट, सेक्शन 286, यू नो दैट एसबीओ का रिपोर्टिंग होता है, ग्रुप बाय ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट का रिपोर्टिंग होता है. सो they may expect us to report on the beneficial ownership. कोई कंपनी का मेज है तो भाई beneficial ownership कहाँ है. But I think so they will be having certain limitations because we can only report what we know to the best of our understanding and whatever due diligence we can do from the client. So they may expect us to do any kind of a STR के reporting में या client के बारे में due diligence में हमें जो beneficial ownership है उसकी भी जानकारी और information हमारे पास होनी चाहिए. जी. I think this CDD is going to be a tricky thing, you know, whole this exercise. Am I right?
You're talking more, if you are using the word CDD, you're talking with the cash part or enhanced due diligence or which one? Enhanced due diligence. Enhanced due diligence, I'm just expecting that let them come with the guidelines. If there is a trigger of a STR, then perhaps there may be a concept of an enhanced due diligence, if at all there is a trigger. Basically, अभी flagging करना चाहते हैं transactions और flagging के base पे आगे की कार्रवाई हो. That is what the way I am understanding. जी sir. Manish Maru wants to ask if a practicing CA is a trustee in a trust and signing authority for banking transactions of that trust, then such CA covered? This is a question which is disturbing everybody because there are so many transactions, so many chartered accountants across who are trustees. Forget signatories in bank account, who are even into trustees also. And आप 9th May का notification देखें या फिर even 3rd May का, you know, managing not to say that I have a question over here which I ask my own self कि मैं किसी public limit, मैं किसी public trust का trustee हूँ, तो is the trust my client? Am I having a client professional relationship? Then I am asking myself the further question कि भाई वो trustee ने मुझे appoint किया, sorry उस trust ने मुझे appoint क्यों किया as a trustee? Not just as a Rajesh Sanghavi, they would have appointed me as a trustee कि चलो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, थोड़े जानकार व्यक्ति हैं, तो आपके एकेडमिक्स की वजह से या आपके क्वालिफिकेशंस की वजह से वो आपको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ फॉर अ मोमेंट एटलीस्ट. But can I say that that is resulting in a client relationship? You know, because everywhere the word, at least 3rd May वाले notification में on behalf of your client in the course of your profession, वो चीजें हैं. So only being a trustee, 9th May का notification in fact ज़्यादा apply हो रहा है as compared to 3rd. And being a signatory जैसे जिन्होंने भी एक query पूछी है, so that is a scenario where at least prima facie you're finding that you're carrying out financial transactions. Now whether on behalf of the client माना जाना चाहिए या नहीं, once again the tilt is more in favor of the notification, but once again I would say safely let us not come on a judgment on this. Let us wait for notifications and guidelines because this is just, you know, something has been shot off and it has been shot off from FATF in their own language. पर हम उसे इंडियनाइज हमें करना पड़ेगा, इंडियनाइज करना पड़ेगा और इंडियन व्याख्या में समझना पड़ेगा. Then we have to come down to the उनकी बात करनी है, फोन करनी. Please continue, Rajesh. Yeah, so to answer the question, as I'm a trustee and I'm the signatory in the bank account of the trust, and hence should it apply on me, I would say the weightage is more towards applying as a RE, but still we need to wait and watch because one question which I'm asking myself also needs to be answered, whether I can treat the trust as my client, whether I'm getting fees from the client. Sometimes you may also do it pro bono, but there are these kind of questions which only time will tell us. But right now I feel the tilt is more towards being a RE. Is there any significance of the word in the course of business? What is used there? Yeah, the word in the course of business, yeah, in relation to these words hold significance because as I said, they want to flag transactions. So they want to flag transactions which are emanating from or which are related to या जिनका संबंध कुछ चीजों से है. Like I remember in one of the sessions I was asked a question कि formation of the company में क्या suspicious transaction हम बताएं. कंपनी फॉर्म है, कंपनी फॉर्म कर दी, उसमें सस्पिशियस क्या है? But then I was just thinking, suppose I was just thinking कि I'm just applying. Sorry, am I clear? Okay. You please continue. Few people are just unmuting themselves and it's creating some disturbance, but please don't mind it. So I was just applying my own presence of mind and analyzing this question, and I visualized a situation कि supposing I know कि I am forming a company from one particular address 127 महात्मा गांधी रोड नासिक, और उस एक एड्रेस पे 20-20, 25-25 कंपनियां बन चुकी है और उसी के डायरेक्टर्स घूम फिर के सब में कंपनी बाकी में डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं और सबके मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो तो लगभग सेम टू सेम चल रहे हैं क्योंकि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है ऑन द पब्लिक डोमेन है और यही मिनिमम शेयर कैपिटल लाख रुपए से बनती जा रही है कंपनियां और सबको देखो तो भाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भाई यही शब्दावली में चल रहा है. Now, I'm not saying this is doubtful, but as a professional, does it ring a bell? आपने तो केवल फॉर्मेशन किया और थोड़ा बेसिक ड्यू डिलिजेंस फाइंड आउट करके आपको तो ये पता चल गया. Does it ring a bell कि this is some kind of a suspicious, इसमें इकोनॉमिक रैशनल क्या है, इसमें I'm not finding. This is where I stop. I just stop this here for a moment and I go back to FATF. वो क्या चाह रहे हैं हमसे? आप फ्लैगिंग कर दो ना, ओके.
That is the objective. Let us go to the intent, the preamble, the legislative intent, rather than the fine shabda. But yes, it is in relation. I hope everybody has registered or noted down the mobile number and the email ID of Rajesh sir. Rajesh sir, with your permission, shall I stop the sharing? Yes, thank you. Are there any other questions? I'm sorry, did it become too heavy a subject? No. Not at all. आपने light बना दिया राजेश जी. Oh my God. We had a very nice panel discussion last time, sir. We had 3,000 plus people that time. Oh my God. I didn't realize there were 3,000 plus people. Yes. To moderation. There is one question. One of our client partnership firm who is exporting goods to an African company where those partner is a director. Do we need to report anything specific under any acts? Oh, I think so. The question is very broad. I mean, I would request the audience, 3rd में 9th में को पढ़िए. Specific उस दायरे में आना बहुत जरूरी है. As chartered accountants reporting, everything is not what they're asking us to do. Basically, with this, I would just like to add whether we need to have the knowledge of those 30 laws and that specific few sections to do all this reporting. Friends, I'll tell you one thing. Why do we have this CP and all that? Basically, value addition के लिए होता है. थोड़ी सी हमें जानकारी होनी और जरूरी है. और PMLA के practice is a very great area of practice. Let me tell you one thing. Great area of practice. कभी-कभी routine income tax या GST से थोड़े से we have burnout, you know, something. So PMLA and Benami are great area of practice. I would suggest, friends, I would suggest personally कि chartered accountants को थोड़ा सा scheduled offense के बारे में मालूम होना चाहिए. सेक्शन 3 के बारे में तो मैं काफी बोल चुका हूं और पीओसी के बारे में काफी बोल चुका हूं. थोड़ा सा शेड्यूल्ड ऑफेंस के बारे में जानकारी आप ले लोगे तो आपको शेड्यूल्ड ऑफेंस पता चल गया. सेक्शन 3 का आपको मेन पकड़ आ गई पूरे एक्ट की. दैट शुड बी मोर देन इनफ. नाउ यू कैन बी केयरफुल इन योर ट्रांजैक्शंस इन योर प्रोफेशन. Yes. Yes, thank you so much. All the participants are thankful to you, sir. And I will now like to request Sir Rahul Lohade, who is the president of this Aurangabad chapter of JCAF Marathwada. I would request him to have a formal vote of thanks. Thank you, Mahavir bhai. On behalf of All India chapter of JCAF, I thank Rajesh ji for accepting our invitation on short notice and giving your valuable guidance to our JCF member. I also thank our CCM, CA Piyush Chhajed, for the presence. I thank one and all for patient hearing. Thank you one and all. Thank you so much. Thank you, Rahul bhai. At the end, I would just request, Pradeep bhai is there? Pradeep bhai, are you there? Pradeep bhai doesn't look like, but again the request for 27th May. Yes. Kindly register yourself. Don't miss this program at any cost, and don't wait for the last time. Okay, so let's do it today and be present on 27th. But please register today. That's a humble request from us, all the committee members, so that we can know where we are standing today. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh bhai. Thank you, Piyush bhai. Thank you, Vidit bhai. And thank you, Rahul ji. Thank you very much for your valuable time and participation. Now, I would like to, yes, thank you, Virag bhai. I will end the meeting here. Thank you so much. Thank you.